Yo, 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 guys. Yo, 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 guys. Just a second. I hope. Hi, 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 guys. Can you hear me now? I hope. I hope this is working now. Fine. Let me know if it is working fine. Is it all right? Perfect. Perfect. Great, guys. Thank you so much for joining so late in the night. Animesh, Himanshu, Akshay, Rajni, Abhishek, uh, of course, Johan Krayev, Harshit. Thank you so much for joining. Uh, Animesh, free है तो बता देना. Like if you want to join, just let me know. I'll send you the link as well. If you want to join, just let me know. Just ping me on WhatsApp, man. कैसे हो भाई? कैसे हो सब लोग? I hope uh, the weekend was great for you guys. I hope सबके लिए weekend बहुत अच्छा गया होगा. Results तो definitely हमारे favor में गए हुए हैं. Swap, hi, Ajay. I hope I'm pronouncing your name correctly. And yes, yes. Uh, Great weekend for us. Arsenal lost. Of course, dodgy decision we can say, but जैसे निधि भाई हमेशा कहते हैं कि वो रशियन रूले की जैसा है. uh, कभी किसी को लगेगा गोली, कभी किसी को लगेगा. ये टाइम आर्सेनल को लगा, जिसके वजह से हमें कुशन मिल गया अच्छा अभी, राइट. सेकेंडली, लिवरपूल ड्रू, तो हमारे लिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया. अभी रिजल्ट वी हैव दैट कुशन, जिसके वजह से अगर हम कुछ पॉइंट्स ड्रॉप भी कर लेते तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. तो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस गेम. बिफोर वी गो अलोंग, Rajni is saying that how is your new work going on? Rajni, the work is going on well, man. I'll be working European timings, तो मुझे uh, अभी एक्चुअली बिल्कुल भी सोचना था टाइम मतलब जरूरत नहीं होता, बिकॉज आई हैव टू वेक अप लाइक 11 a.m. 12 at noon as well. मुझे मैं I have to start working at 2 p.m. in the afternoon. So the late night games actually work pretty much in favor for me. So this is actually very great for me, right? But it's going well. Thank you so much. Hi Pratik. Hi. Hi. Thank you so much. Sarthak is saying that best of luck for the game. Unfortunately, I won't be able to watch your stream after class tomorrow. No worries, Sarthak. Thank you so much for joining at least for like 2 minutes. आपका काम, आपका कॉलेज, आपके क्लासेस, आपके एग्जाम्स बहुत ज़्यादा और प्रॉब्ली मोर इम्पोर्टेंट है, तो आप उस पे आप प्लीज़ चेक करना. uh, Akshay, though I'm a kind of a product manager, product success manager actually. I've done my MBA from MICA, and since then I've been basically working in SaaS, in the world of marketing, branding, etc. But yes, हिमांशु, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. आई नो आप मोस्टली फोन पे मैचेस देखते हो, आप स्ट्रीम पे आ लाइक हाफ टाइम के वक्त आप स्ट्रीम पे आते हो या फिर फुल टाइम के वक्त आप स्ट्रीम पे आते हो. आप सीन दैट. तो not a problem. Thank you so much for joining for a bit. Before you actually go to the game, let's hope that we can have some conversation about how we can, uh, just to try and analyze the game a little bit. And playing 11. Yes, yes, yes. Playing 11. I'll just show the playing 11 in a minute. Just give me 2 minutes. मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ कि प्लेइंग 11 क्या है आज का. गिव मी 1 सेकंड. या मीनवाइल,
जॉइन विद ड्रोग बाबा कह रहे हैं प्रतीक। ब्रो जनरली ये जो ऐसे डबीज जो होते हैं ना, उसमें एक प्रॉब्लम ये होता है कभी कभी कि आप आपके इमोशंस बहुत हैवी हो जाते हैं, कुछ ऊपर हो जाते हैं, तो उस वक्त आई थिंक बाबा भी यही प्रेफर करेंगे कि वो अकेले रहे। और मतलब कुछ अगर उनको कहना है तो वो ठीक से शायद मेरे सामने, मतलब वो हो जाता है थोड़ा बहुत, राइट। बट या हम लोग डेफिनेटली आगे आई थिंक नेक्स्ट फिक्सर के वक्त हम लोग कुछ ट्राई कर सकते हैं जहाँ पे मैं बाबा को ज्वाइन कर सकता हूँ। Uh, but for this particular stream, I think it's currently it's a little too late for us to plan something like that. But yeah, we'll definitely figure something out in the future. Happy with Brennan starting? Yes. I been calling out for Brennan Johnson for a bit now, so I'm to really happy that Brennan is starting. Give me 1 second. I'll just quickly share my screen. It's, yeah. So Vicario starts, of course. Pedro Porro है, फिर रोमेरो है, वैंडेविन है, उडोगी है, बिसुमा, सार, मैडिसन, जैसे मैंने कहा था। उडोगी स्टार्स, दैट्स अ रियली इंपॉर्टेंट एडिशन फॉर अस। उन्होंने ज्यादा कुछ आई थिंक ट्रेनिंग नहीं किया हुआ है, तो शायद इसे कह रहे कि थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है उनके लिए, बट आई एम नॉट वरीड अबाउट उडोगी दैट मच। बिसुमा, सार, मैडिसन हमारा बेस्ट मिडफील्ड अब तक का। हम इन तीनों को कंटिन्यू करना चाहिए था। मैंने अपने जो प्रीव्यू वीडियो था उसमें भी कहा था कि डोंट ट्राई टू मेंट समथिंग दैट इज नॉट ब्रोकन। तो बिसुमा, सार, मेडिसिन स्टार, कुलुसेव्स्की, सॉन, जॉनसन। यस, जॉनसन हमारे मार्की साइनिंग है इस सीजन के। अब तक उनको एक अच्छा रन ऑफ गेम्स नहीं मिला था, बट आई थिंक दिस गेम कैन बी दैट गेम वेयर ही कैन मेक अ डिफरेंस। रिचार्लिसन ऑन द बेंच, ब्रायन हिल ऑन द बेंच, लोसेल्सो, बेंटांकोर, स्किप, हॉयबियर, डायर, एमरसन रॉयल एंड फॉस्टर ऑन द बेंच। बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइनअप है हमारा। आई थिंक दिस इज आवर बेस्ट प्लेइंग 11। or I'm really glad that all of these players are. Where is Wellis? Yeah, Wellis is something that I was also kind of worried कि वो क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, बट आई थिंक हमारा बेंच जिस तरह से अभी बना है, रिचार्लिसन, ब्रायन हिल, आई थिंक रिचार्लिसन वी कैन सी कमिंग ऑन फॉर सॉन, अगर सॉन को जाने पड़ता है, अगर जाने लगता है इन द सेकेंड हाफ। आई थिंक वी आर ट्राइंग टू एड more players in the midfield so that जो मिडफील्ड बैटल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जैसे मैं कह रहा था हमारे प्रीव्यू वीडियो में भी। सो आई थिंक दैट्स व्हाई वेलिस काइंड ऑफ मिसेस आउट हियर अ लिटिल बिट। पॉजिटिनो के लिए थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ रजनी। यस, ऑफ कोर्स हम सारे पॉजिटिनो के लिए थोड़ा इमोशनल है जब वो आएंगे पिच पे, इसलिए मैं प्री मैच शो भी देख रहा हूँ कि उसमें कुछ देखने मिलता है पॉजिटिनो की एंट्री, पॉजिटिनो का जो भी when he steps onto the pitch, what kind of reaction. And that's why I'm wearing my earphones as well, so that I get to hear the cheer from the crowd as well. But let's see how it goes, man. Let's see how it goes. थोड़ा रफ दिख सकता है, स्वॉप कह रहे हैं, थोड़ा रफ दिख सकता है उडो की गेम। आई एग्री, दिस एंड ओनली बिकॉज ऑफ हाउ वी आर kind of he's only I think trained once this entire week। एक ही ट्रेनिंग सेशन उन्होंने किया हुआ है, तो I just hope कि उसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। Krish, yes, I can speak Marathi very fluently. I'm Maharashtrian. My mom's Maharashtrian, my dad's Goan. But at home, we speak Marathi. I did my schooling in a Marathi medium school, so I speak Marathi very fluently, grammatically correct as well because of my schooling being in Marathi medium. The so yeah, my like language of instruction was Marathi when I was in my school. So yeah, I do speak Marathi, Krish. Thank you so much for joining, by the way. Thank you so much for joining. Uh, हम कुछ comments लेते हैं। Ishrat, hello, hello, hello. Thank you so much for joining, man. We have, where is Manor Solomon, Will Jones? I think Solomon का injury हो गया था, surgery I think हो गया था, if I'm not wrong, about a month ago. And जिसके वजह से Solomon was going to miss out on like for a longer period, and that's why we're not seeing him anymore.
बेस्ट डिफेंडर ऑफ द वर्ल्ड क्रिस्टियन रोमेरो, आई टोटली अग्री। मेसी द गोट ने कहा है कि ही इज द बेस्ट डिफेंडर ऑफ द इन द वर्ल्ड, और हम कौन होते हैं जो मेसी को कुछ कह सके। बट या अगर उनके परफॉर्मेंसेस देखिए ओवरऑल, इस सीजन में स्पेशली वर्ल्ड कप में जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया, इस सीजन में वंस मिकी वैन डे बीन केम नेक्स्ट टू हिम, जिस तरह से वो कंपोजर के साथ का अपना गेम बना रहे, I'm really glad that we got Romero. So we got Romero when Nuno Espirito Santos was our manager, और हम उस साल यूरोपियन कॉन्फ्रेंस लीग में खेल रहे थे। पाराटीची का फर्स्ट साइनिंग था वो, एंड आई कैन नेवर इमेजिन क्या व्हाट पाराटीची टोल्ड रोमेरो सो दैट ही केम टू अस। मिरेकल, आई फील सो। मुझे लग रहा था कि शायद वो ये साल चले जाएंगे अगर एंच का जिस तरह से स्टार्ट हुआ है वो अगर नहीं होता। But I think he's growing into Tottenham very well, right? He's loving Tottenham. Let's just let's just take a Chelsea fan watching his rivals club creator stream. I'm a Chelsea fan and watching South Stand View Alok by stream. Best of luck for us and you guys also for the match. Thank you so much, Viper. Thank you so much for joining. Uh, I understand. ये कभी कभी ऐसे होता है कि आप राइवल स्ट्रीम पे आ जाते हो ड्यूरिंग द गेम। आई थिंक मेरा I've seen that before as well. But thank you so much for joining and I hope एक कॉम्पिटिटिव मैच देखने मिले, एक प्रॉपर ब्लॉकबस्टर मैच देखने मिले हमें। एंड गुड लक टू यू टू, बट बस हार जाओ। Do you play FPL? Yes, I do, Ishrat. If you have any FPL leagues that I can join, just do let me know. You can like put it in the comments as well of the stream later on, क्योंकि स्ट्रीम के कमेंट जो होते हैं यहाँ पे लाइव चैट जो होता है वो सारे शायद कमेंट्स मिस हो जाए, बट यू कैन probably like message me on Twitter as well and I can join those FPL leagues. Just let me know. Aryan कह रहे हैं कि what are your hopes from this match? 3 points and 3 points only. 3-1 is what my heart says. Uh, can be 3-2, 4-2 as well. I see lots of goals in this game for some reason. तो yeah, I hope बस टॉटनहम जीत जाए कैसी भी हालत में, किसी भी हालत में। That's the thing. पेरिसिच इज ऑल्सो इंजर्ड, यस। मैं कुछ कुछ कमेंट्स ले रहा हूँ, मैं शायद थोड़े कमेंट्स लेट पढ़ूं। माय केन का बुंडेसलीगा हाइलाइट्स देख रहा था एंड आई क्राइड। यस रजनी, ही प्लेड सो वेल एंड दिस इज दैट केन दैट वी नो ऑफ, राइट? हम हम हमेशा केन को ऐसे ही देखते आ रहे थे। सारे राइवल फैंस कहते थे कि केन को शायद एक बड़े लीग में खेलने की जरूरत है, एक बड़ी टीम के लिए खेलने की जरूरत है, तब तक वो एक बड़ा स्ट्राइकर नहीं माना जाएगा। पर बुंडेसलीगा में जाके आप बायर्न म्यूनिख के साथ खेलते हुए वो अपने सारे हेटर्स को शट कर रहे हैं, तो आई एम रियली ग्लैड कि ये हो रहा है। इंडिया स्पर्स का पहला फैंटेसी होता था, आई थिंक ये साल वो रिन्यू नहीं हुआ था अक्षय, आई विल जस्ट चेक। बट अगर ये साल मतलब नेक्स्ट सीजन वी डेफिनेटली विल स्टार्ट। देयर आर अदर स्ट्रीम्स, मुंबई स्पर्स का एक है, आप मुझे ट्विटर पे रीच आउट कर सकते हो, आप मुंबई स्पर्स को ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो एंड विल ट्राई टू ऐड यू अप इन दैट एज वेल। Van de Ven is great as well. So is Pedro Porro. Watching Spurs winning EPL would be a fairy tale. Yes, definitely. But title talks बहुत ही early है पंकज। I feel कि आई थिंक हाफ द सीजन जाना चाहिए जिसके बाद ही हम ये सोच सकते हैं। एंड आज का हमारा पहला सुपर चैट आ गया है आदित्य सेठिया, वेरी वेरी रेगुलर इन आवर स्ट्रीम्स। लेट मी हाईलाइट इट, आदित्य सेठिया, थैंक यू सो मच फॉर योर सुपर चैट। And I hope you stay for the entire game. And I hope Aditya is my friend actually, or he follows Chelsea. He supports Chelsea. He's a Chelsea fan. So I hope that Tottenham actually wins today, and he's on the stream as well, so that I can celebrate and he can watch me celebrate. But अगर गलती से चेल्सी जीत जाती है तो आदित्य तुझे 100-150 रुपए का तो मुझे एक सुपर चैट डालना पड़ेगा। इससे यार ऐसे लग रहा है यार, मतलब कोई आई थिंक कोई भी सीजन में चल सिटी फेवरेट्स ही रहती है टिल दी एंड। जब तक वो नहीं हाथ जीतती तब तक वो फेवरेट्स ही रहेंगी मेरे ख्याल से। तो आई देर इज
I mean, there are absolutely no two doubts about it. ठीक है. पर टॉटनहम, लिवरपूल, आर्सेनल अभी भी टाइटल रेस में है. सिटी अब तक लास्ट सीजन की जैसे लग नहीं रही है. तो स्वॉप कह रहा है 100 कम है, 2 लाख मांगो. हाँ, सिटी, यस डेफिनेटली. अगर जीतती है तो आई विल सेंड यू द लिंक टू जॉइन द स्ट्रीम. हाँ, हाउ विल सेस्को बी फॉर विंटर ट्रांसफर? ब्रो, विंटर ट्रांसफर में who I would genuinely like at Tottenham is a left winger and a centre back. I don't have a preference currently, but what I would love to see, I mean, it's again going to be some names that we generally don't associate with. But if you ask me one name, I would really love to have Kubo in our team. So Kubo, or center back again, somebody like Lloyd Kelly, जो बॉर्नमथ का है. That would be really great. एंड रजनी, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर योर सुपर चैट एज वेल. आप हमेशा से रेगुलर रहे हो मेरे चैनल पे. एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू जो इतनी रात को भी स्ट्रीम पे आए हैं, सुपर चैट कर रहे हैं, और यू नो मदद कर रहे हैं इस चैनल को और ग्रो होने के लिए. सो आई एम रियली रियली थैंकफुल. यस. हम, यार ये लोग स्पर्स को इतना हल्के में क्यों लेते हैं? यौन मतलब, मैं कहूंगा कि कुछ एक एरोगेंस, नॉट इन द रॉन्ग वर्ड, ओके, आई एम नॉट सेइंग इन द रॉन्ग मीनिंग. एरोगेंस मतलब एक एक ये होता है ना, कि हमेशा से उन क्लब्स ने, ये जो बड़े क्लब्स है, टॉप फोर, ट्रेडिशनल टॉप फोर जो हम कहते हैं, उन्होंने उनके उनके साथ हमारा रिजल्ट हमेशा से खराब रहा हुआ है. चेल्सी का अगर आप 2019 से लेके अब तक का हमारा लीग देखो, तो हमने सिर्फ 2 बार जीता हुआ है और 1 बार ड्रॉ किया हुआ है. बाकी सारे मैचेस चेल्सी जीती हुई है, इन द प्रीमियर लीग, इन द कप कॉम्पिटिशन एज वेल. जिसके वजह से आई थिंक एक रेपुटेशन बन गया है टॉटनहम का, अनफॉर्चुनेटली. इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये चेंज नहीं कर सकते. हम करने की डेफिनेटली कोशिश कर रहे हैं ये सारी चीजें चेंज. तो आई एम जस्ट होपफुल ऑफ सीइंग दैट कि हम ये जो चेंज कर रहे हैं चीजें. जस्ट अ सेकंड, आई एम जस्ट पुटिंग माय स्ट्रीम अप प्रॉपर्ली. और ये परसेप्शन चेंज होने में टाइम लगता है, राइट? अगर आप देखोगे, सिटी जैसे जब ऊपर आई, सिटी को अब तक अभी भी बोला जाता है कि उनके पास फैंस नहीं है, उनके पास फैंस नहीं है. तो ये सारी चीजें जो है वो होती रहती है, अनफॉर्चुनेटली. तो आप क्या ही कहें उसके लिए. जस्ट अ सेकंड. या, हु इज योर फेवरेट टॉटनहम प्लेयर? लूसीफर, इस करंट टीम में अगर आप मुझे पूछो तो मेरा फेवरेट प्लेयर है मैडिसन. आई एब्सोल्युटली लव मैडिसन. ही इज, आई थिंक, इज बॉर्न टू प्ले फॉर टॉटनहम. अगर आप मुझे पूछो कि जब से मैं टॉटनहम को देखना शुरू किया हूँ 2007-8 सीजन से, तब से लेके अब तक मेरा फेवरेट प्लेयर कौन है? तो मैं कहूंगा गैरेथ बेल. फिनोमिनल प्लेयर. जब भी वो खेलते थे ऐसा लगता था कि कुछ मैजिक होने वाला है. तो आई रियली लव्ड गैरेथ बेल. तो या, ये 2 प्लेयर्स मैं कहूंगा, मैडिसन एंड गैरेथ बेल, मेरे ऑल टाइम फेवरेट प्लेयर्स जो टॉटनहम के, जब से मैं टॉटनहम को देखना शुरू किया हूँ. प्रीवियस जो मैं ऑफ कोर्स हाइलाइट्स और ये सब देख के जो अगर मैं देखता हूँ, तो मेरा फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स इज ऑफ कोर्स ग्लेन हॉडल. he had magic again playing in that midfield. So yeah, these 3 players I would name. Alok bhai, question for you. Forget today's match. It's supposed to be competitive for the champions. Which players department to be solved in January? I think मैंने अभी ये कहा. एक, हमें एक लेफ्ट विंगर की जरूरत है, और हमें एक सेंटर बैक की जरूरत है. अगर ये दोनों पोजीशंस हम अगर कवर कर लेते हैं, तो आई फील कि अगर हम जनवरी तक टॉप 2 टॉप 3 में रहेंगे, और अगर जो गैप है हमारा, अगर हम फर्स्ट रहेंगे तो ऑफ कोर्स वेल एंड गुड. बट अगर हमारा, हम सेकंड रहे, अगर हमारा गैप जो है, जो भी टीम फर्स्ट रहेगी उससे अगर मेयर सिर्फ 2 या 5 पॉइंट का रहेगा, तो ये 2 प्लेयर्स आने के वजह से, ये 2 एरिया सिक्योर करने की वजह से हम एक अच्छा टाइटल रेस दिखा सकते हैं. सो यस.
So आप मतलब I do understand arrogance नहीं, but they want someone to mock. I totally understand this. एक बाबा ने उस दिन एक अच्छी एक बात कही थी कि लोग एवर्टन को भी मॉक करते हैं, एस्टन विला को मॉक करते हैं, न्यूकासल को भी मॉक करते हैं, लेकिन उनके फैंस है नहीं हमारे सामने। तो हम कभी ज्यादा उनके बारे में सोचते नहीं है, हम उनको मॉक करे जाते हैं। जब सामने फैंस रहते हैं तब आप और मॉक करते हो, बिकॉज आपसे रिएक्शन मिल जाए, आपसे उनको रिएक्शन मिल जाए। जैसे हम लोग स्कूल में बुलिंग का कहते थे, राइट? कि द मोर रिएक्शन दैट यू गेट फ्रॉम समबडी, यू विल ट्राई टू बुली मोर एंड मोर। वो थोड़ा वैसे कुछ है। तो मैंने एक सोचा है, ऑफ कोर्स मैं भी जब ट्विटर पे पहले पहले आया था तब मैं लोगों से झगड़े करता था उसके वजह से कि आप टॉटनहम को ऐसे क्यों बोल रहे हो, वैसे क्यों बोल रहे हो। मैंने एक अच्छी सलाह मतलब खुद से सीखी है ये एक बात, कि आप जितना इग्नोर कर सके ऐसे लोगों को आप इग्नोर कर दो, क्योंकि उनके कहने से या ना कहने से टॉटनहम बड़ा या छोटा नहीं होता। और सिर्फ टॉटनहम की ही बात नहीं है, आप जिंदगी में आप कोई भी कहीं कुछ भी करते रहोगे, उनके कहने से या उनके ना कहने से आपका जो अचीवमेंट है वो कभी कम या ज्यादा नहीं होगा। आपको पता है कि आप क्या वो अचीवमेंट कितना बड़ा है आपके लिए। सो आई वुड से जस्ट इग्नोर इट। या ऑल टाइम फेवरेट प्लेयर बेल मैंने कह दिया। इट्स गोइंग टू बी अ मिडफील्ड बैटल, यस सेठिया। जैसे मैंने कहा था, टॉटनहम को अब तक एक अच्छा मिडफील्ड देखने नहीं मिला था जो हमें क्या कहते हैं, जिसको एक अच्छी टक्कर दे सके हमारे मिडफील्ड को, वो आई थिंक चेल्सी के पास है, ऑन पेपर एटलीस्ट। तो आई फील कि चेल्सी कैन गो टो टू टो विथ अस। इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अगर हम इन्वर्ट करते हैं और मिडफील्ड ओवरलोड करते हैं उसके बाद आपकी मिडफील्ड कैसे मैनेज करती है टॉटनहम के मिडफील्ड को, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। अगर आप नहीं कर पाते हो वो, तो आई थिंक यू विल प्रोबब्ली कंसीड अ गोल इन द फर्स्ट 10-15 मिनट इटसेल्फ। हम थोड़े और चैट लेते हैं। या आलोक हैज एक्चुअली मेट बेल, albeit virtually। 2020 में आप टॉटनहम के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। एज द चेयरमैन ऑफ इंडिया स्पर्स, हम क्लब से कुछ बात कर रहे थे अराउंड कोविड टाइम्स के, कुछ इंडिया के फैंस के लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं, कुछ वीडियो कॉल्स या फिर कुछ अरेंज कर सकते हैं। तो टॉटनहम ने बेल के साथ हमारा एक कॉल अरेंज किया था। हमारे तब इंडिया में आई थिंक 11-12 सपोर्टर्स, 15, आई थिंक 12 या 13 सपोर्टर्स क्लब से तब। तो हम हर एक सपोर्टर क्लब से एक एक रिप्रेजेंटेटिव को लेके आए थे उस कॉल पे। और सिर्फ मुझे पता था कि बेल आने वाले हैं उस कॉल पे, और वो अचानक से आ गए। उन्होंने एक क्विज किया था हमारे साथ और हमने एक जूम कॉल पे बेल से बात की है, गैरेथ बेल से। दैट वाज द सीजन अंडर मोरिनो जब बेल टॉटनहम के लिए वापस खेलने आ गए थे, ऑफ कोर्स दैट फॉर दैट वन सीजन ऑन लोन, एंड इट वाज सरियल स्पीकिंग टू गैरेथ बेल। मैंने अब मेरा क्वेश्चन आई थिंक वो इवेंचुअली फाइनल वीडियो में नहीं आया था, बट तब हमने जो रोडोन को साइन किया था। तो मैंने जो रोडोन के बारे में पूछा था गैरेथ बेल को कि अगेन वेल्श प्लेयर, गैरेथ बेल ने खुद ने रेकमेंड किया था वो प्लेयर को, कि हम बाय करें उस प्लेयर को, साइन करें उस प्लेयर को। तो गैरेथ बेल हैड लाइक रियली ग्रेट थिंग्स टू से अबाउट ऑफ कोर्स जो रोडॉन। और कुछ चैंपियंस लीग नाइट्स के बारे में कुछ मेंबर्स ने सवाल पूछे थे एंड ऑल ऑफ दैट। इट वाज वेरी सरियल टू एक्चुअली स्पीक टू गैरेथ बेल, एंड दैट्स व्हाट समथिंग गोना हैपन। ऑल टॉटनहम फैंस हियर वर स्टिल हियर बिफोर द गेम स्टार्ट्स। ऑफ कोर्स 5 मिनट्स है हमारे पास। जब मैंने टॉटनहम देखना शुरू किया था, तो हमारे जो कैप्टन थे लेडली किंग, अगेन वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट प्लेयर्स, लव टॉटनहम थ्रू आउट। सिर्फ एक क्लब के लिए खेले। उनका कोच जो था वो गैरेथ लेडली किंग का, दिस इज माय क्लब, माय वन एंड ओनली क्लब, वो उनका कोट व्हाइट हार्ट लेन पे लगाया हुआ था। और इट यूज्ड टू बी अ प्रिविलेज टू सी लेडली किंग प्ले, डिस्पाइट हैविंग नो कार्टिलेज इन हिज नी। उसके एक नीज में कार्टिलेज नहीं था, उसके बावजूद वो इतना ब्यूटीफुली खेलते थे। उनके 10-12 साल के करियर में उनको सिर्फ 8 येलो कार्ड मिले हैं और 0 रेड कार्ड्स मिले। इट्स phenomenal for a defender to not have a red card in the Premier League at all। एकदम क्लीन डिफेंडर, और वो डिफेंडर वापस आ रहे, हमें मिलने आ रहे हैं एक्चुअली इंडिया में पहली बार। मुंबई में रहने वाले हैं वो 3 दिन, फ्राइडे सैटरडे संडे। आई एम गोना स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद देम। संडे को हमारा स्क्रीनिंग होने वाला है। uh, सब स्क्रीनिंग में तो हम सब साथ में ही रहेंगे, बट those 3 days I will basically be spending a lot of time with Ledley King and Ozzy Ardiles।
uh, so yeah, it's gonna be fun, and I'm gonna bring a lot of क्या कहते हैं news to you. I'm gonna bring a lot of videos to you as well during that period. So let's see what happens. फिलहाल के लिए हम कुछ कुछ comments हैं तो हम उनको बाद में ले लेंगे. पर Bale is coming today in stands. Yes, Bale has been called today to as a guest. Pochettino and Ange Postecoglou just it's a moment. It's a moment. Man, I thought आई थॉट कि मैं पोचेटिनो को जब देखूंगा चेल्सी के लिए टॉटनहम के स्टेडियम पे तो मैं शायद मेरे दिमाग में थोड़ा सा गुस्सा रहेगा कि आप चेल्सी कैसे जा सकते हो ये वो. बट उनको वापस इस स्टेडियम में देख के आई थिंक मेरे आंख में थोड़ा ऐसे आई एम जस्ट लाइक फीलिंग लिटिल टेरी. He made Tottenham what it is today. This stadium, he brought Champions League football, that Champions League night against Ajax. He taught us how to dream. So yes, it's crazy. It's I think आप जितने भी लोग देख रहे हो टॉटनहम के फैंस जो हो यहाँ पे, आई थिंक आप सभी को ये लगता होगा कि Israel, I think I missed your comment. For me, game will be decided by going wide in wings as midfield will be much loaded. Ishrat, for Chelsea, yes. Chelsea, मैंने ये कहा हुआ है कि one of the few teams प्रीमियर लीग में जो विथ बहुत ही इंटेलिजेंटली यूज करती है और उनके पास बहुत अच्छा पेस है. तो आई एग्री कि चेल्सी के लिए ये गेम डेफिनेटली मैटर करेगा कि वो विथ कैसे यूज करते हैं. टॉटनहम के लिए वो विथ से ज्यादा हमारे वाइड प्लेयर्स उनके फुल बैक्स कितने स्ट्रेच करते हैं और वो कितना एक पॉकेट्स बनाते हैं अराउंड द मिडफील्ड. That will be really interesting to see because we will be like Madison and Sar will be occupying those half spaces. तो हमारा मोस्ट ऑफ द अटैक्स आई थिंक सेंटर ऑफ द हाउस से ही जाएगा, सेंटर ऑफ द पिच से ही जाएगा. जो मेरे ख्याल से चेल्सी का अटैक जो है वो बहुत सारे विंग से आएगा. सो यस. Guys, I'm watching on Hotstar. I'm in my room as you can see. I'm watching on Hotstar. I've now taken the bloody Geo Air और Geo Air में स्टार स्पोर्ट्स के आप कोई भी चैनल देखते हो, स्टार के कोई भी चैनल देखते हो, तो the set-top box itself like pushes you directly to Hotstar. So there's no other option for me but to watch on Hotstar. So I hope uh, you you guys just don't spam the score. अगर आप स्कोर के बारे में लिखना चाहते हो इसके बारे में तो प्लीज मेरे रिएक्शन के लिए रुको और उसके बाद आप जो चाहे वो कर सकते हो. लेट मी pour some cold drink for myself. पंकज, थैंक यू सो मच फॉर योर सुपर चैट. मुझे आपका सुपर चैट पढ़ने दो पहले. आपको स्पर्स क्यों पसंद है? मुझे तो 2011 की एक स्क्वाड अंडररेटेड लगती थी. पार्कर, वाट, बेल, वॉकर, किंग, डिफो, लेनन, डैनी रोज, कबूल, एडेबायर. यस पंकज, फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर योर सुपर चैट. आप अगर टॉटनम फैन हो तो आई कैन अंडरस्टैंड कि व्हाई डिड यू फील आई मीन फॉल इन लव विद दिस टीम. मेरे लिए बस 3-4 सीजन पहले 2007-8 सीजन में मैं टॉटनहम को फॉलो करना शुरू कर दिया था. दैट वाज द फर्स्ट सीजन आई स्टार्टेड वाचिंग टॉटनहम आल्सो एंड आई फेल इन लव विद द टीम ऑफ बर्बटॉफ, किंग, of course Defoe, we had Lennon, like absolutely crazy. नेक्स्ट सीजन वी हैड हैरी रेडनैप, मॉड्रिच केम. उसके बाद वाले सीजन पे बेल का जस्ट रिसर्जेंस, मतलब सर्जेंस ही नॉट रिसर्जेंस, बेल का सर्जन स्टार्ट हुआ था. तो आई फेल इन लव विद दैट टीम. और वियर्ड लोग थे भाई हमारे पास तब वो टीम में. हमारे पास वो बेनवा असाउ इकोटो था. वी हैड जोनाथन वुडगेट इफ यू रिमेम्बर. तो काफी इंटरेस्टिंग टीम थी हमारे. हुरेलियो गोमेज गोलकीपर थे. उसके पहले रॉबिन्सन, पॉल रॉबिन्सन गोलकीपर थे. इट वाज फन टू वॉच टॉटनहम बैक देन. बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल.
आप ऐसी टीम हुआ करती थी जो आप मैच खोल के देखो, आपको खुद को नहीं पता है कि कौन सी टॉटनहम आज खेलने वाली है और कौन सा परफॉर्मेंस हमें देखने मिलने वाला है। हाफ टाइम तक हम बार्सिलोना के जैसे खेलते थे और हाफ टाइम के बाद हम ऑटोमेटिकली बर्नली स्टोक जैसा खेलना शुरू कर देते थे। इट वाज वियर्ड, इट वाज अ फन राइड। Modric of Spurs had a crazy gold FIFA card. Yes, Modric at Spurs was a crazy player himself. Really loved having in there at in that midfield. Uh, हमारे पास वो we had a midfielder named Sandro. आपको याद रहेगा, ब्राजीलियन सैंड्रो, crazy player. His long passes were absolutely crazy. But yes, the game is starting now. So let's see. Come on, you Spurs. Come on, you Spurs. Is Bale the greatest Spurs player after Kane in the Premier League era? Yes. In the Premier League era, definitely yes. I think Son close to Bale, very close. But yeah, I would say Bale. Son, Kane, Bale, and Son for me. And then Modric. Come on, you Spurs. Uh, जैसे हमें लग रहा था कि थोड़ा विंग से वो लोग अटैक स्टार्ट करेंगे। आई थिंक दे गोना यूज द विंग very interestingly. Sayed is saying, "Hi Sayed. Fun fact: Sayed is a Mumbai Spurs member, and हम एक दूसरे को we worked for with each other for a bit, for a month or so, and suddenly हम एक दूसरे को ऐसे ही एक बार ऑफिस में चलते चलते एक दूसरे को मिल गए थे। uh, तो yes, Sayed. Hi Sayed. Nice to see you here. Yeah, I get it. Like Modric had by then gone. Bale had also gone from Tottenham. Tottenham का एक दूसरा मतलब पोचेटिनो वाला सीजन स्टार्ट हो गया था, तो आपको याद नहीं रहेगा ऑफ कोर्स तब का टॉटनहम। बट तब का टॉटनहम वाज क्रेजी क्रेजी। What are your thoughts on Eriksen? I would put him over Modric, just considering Spurs career. No man. Uh, I get what you're saying. Modric का रोल डिफरेंट था उस टॉटनहम में. Eriksen played much higher. Modric did not play that high. बट हमारे वो 2 साल में जब हम चैंपियंस लीग में चले गए थे इंटर मिलान के साथ, वो जो हमारे मैचेस हुए हैं, एसी मिलान, दो सैन सिरो ट्रिप्स बेसिकली फॉर बोथ मिलान टीम्स, they were absolutely crazy, and Modric was very pivotal for us in those games. So I would always consider Modric over Eriksen. Pratik, yes, I agree. केन का इस टीम में अगर रहता तो मतलब वही है, इफ्स एंड बट्स। किसी किसी ने एक कहावत है ऐसे इंग्लिश में कि इफ माय ग्रैंडमा हैड टायर्स आई वुड कॉल हर बाइसिकल। वैसे हो कि इफ्स एंड बट्स करके अभी कुछ फायदा नहीं है, जो है वो है, और हमें बस वी हैव टू जस्ट मेक डू विद दिस, एंड लकीली वी आर नॉट मिसिंग केन, which is more important than anything else. As you can see, उनकी मिडफील्ड हमारे प्लेयर्स पे एक अच्छा प्रेशर बनाए रखी है। ऑफ कोर्स थोड़ा स्टार्ट, बट हमारा स्टार्ट थोड़ा स्लो ही रहा है जनरली मोस्ट गेम्स में। हमें थोड़ा वो टेम्पो पकड़ने में थोड़ा डिफिकल्टी होता है इन द बिगिनिंग, बट या Chelsea are trying to get mistakes out of us as much as possible. What do you think? Who will be the next 120 million plus signings in PL, which Chelsea doesn't make? Which Chelsea doesn't make? आई थिंक ओसीमैन वुड बी दैट प्लेयर। अब वो कहाँ पे जाता है? चेल्सी जाता है, यूनाइटेड तो नहीं जाएगा डेफिनेटली, उन्होंने हॉयलैंड साइन कर दिया अभी।
इट विल बी डिफिकल्ट टू सी लाइक कि कौन ओसिमेन को साइन करता है। आई थिंक प्रीमियर लीग में चेल्सी अकेली है जो साइन कर सकती है उसको। हु एल्स? आई डोंट सी एनी अदर प्लेयर करंटली हु विल बी 120 प्लस इन द प्रीमियर लीग। Timestamp, Aditya, is just below this scorecard. If you can't, just let me know if you can see this. या फिर मैं वो थोड़ा सा ऊपर उठा लेता हूँ। जस्ट स्कोर लाइन के नीचे ही थोड़ा टाइम स्टैम्प है। ओह, ऑफ साइड, ऑफ साइड। What I will do is I will just remove my name from the bottom. Yeah, I hope this is better now. Good. Ah, anyway, आप मुझे बताओ, आपके the timestamp that is coming is आगे from live. Yeah, I get it, I get it. क्योंकि वो जो टाइम स्टैम्प है वो आई थिंक वो डायरेक्टली फॉर्ट मॉप का जो मैंने ये लिंकअप किया हुआ है ओबीएस से, वहां से डायरेक्टली आ रहा है। एंड ये ओबीएस का ही मेरा स्ट्रीम चालू है जिसकी वजह से लाइट थोड़ा सा बीच बीच में फ्लिकर हो रहा है। गोल! यस! Doesn't matter how it comes, doesn't matter how it comes. Brilliant. Come on, come on, come on. Let's go, Tottenham, let's go. What a good pass. Look at how open Kulusevski is. Beautiful. And I think Son was anyway going to reach there. Great, great, great goal. That's a great goal. Truth hurts कह रहे हैं. Oh, we go again, we go again, we go again, we go again. Ooh. As a City fan, if we are not winning the PL this time, then I want Tottenham to win. Thank you so much, Truth Hurts. And I hope this is the truth that hurts a lot of other players or a lot of other teams. But yes, if Chelsea defends like that, trust me, humiliation coming. Yes, I agree. Goals galore होने वाले इस मैच में. Irrespective of what happens, there are going to be many goals that are coming. This time we have gods of fortune on our side. Is this going to be the thrashing we've been itching for? Please, please, please. I want 5 goals. I hope that we like think about that 5-3 under Pochettino's first season that we had. जब केन ने 2 गोल मारे थे, that would be amazing again. But yeah, let's calm down. Let's calm down. Let's not get ahead of them ourselves. Uh, we have to keep going now. 1-0 is not enough in the Premier League. We have always seen that. We have to stay calm and actually look at the game very slowly. Yes, Viper, I know आप चेल्सी फैन हो, uh, पर हम जो है वो अभी है. Imagine what Harry Kane will go through if Spurs win the final. He will be ecstatic. He will be ecstatic. I know it will hurt him a lot. ऐसे क्लब जाओ, आपका बॉयहुड क्लब के साथ जीतने का जो मजा होता है वो अलग होता है.
I know uh, he will, you know, cry, but he'll be very, very, very happy for Tottenham, definitely. I just don't think you understand. He only cost 5 million. It's better than Mudrik. We've got Johnson, Brennan Johnson. Doesn't rhyme, but I will take it. Even 2-0 is not enough in PL. Ask Chelsea. Yes, exactly. Good one, good one, good one. Come on. Good ball. अब बोली को कॉल करना पड़ेगा, बेल को मैच में उतार दो एज अ चेल्सी प्लेयर। 100 मिलियन का बिड चले जाएगा बेल को। बेल फ्री एजेंट है, उसके बाद भी उसको 100 मिलियन दे दिए जाएंगे। द स्क्रिप्ट हैज ऑलरेडी बीन रिटन। Spurs win the PL and Bayern go trophyless. Shaurya, I think Bayern will win, man. That I don't think that league is too difficult for Bayern to win. Initial hiccups आते हैं, but it won't be difficult for them, definitely. Hey, don't do this. गाइस आई एम सॉरी, थोड़ा लाइट फ्लिकर हो रहा है मेरे ख्याल से, और आई थिंक अगर स्ट्रीम थोड़ी बीच बीच में हैंग हो रही है तो प्लीज मुझे बता दो, क्योंकि ये ओबीएस सॉफ्टवेयर का थोड़ा इशू है। यस 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 विपिन, आई नो दैट इट्स फ्लिकरिंग। there's some issue with the OBS that I'm streaming this from, and I just like don't want to restart my laptop because otherwise ये stream मुझे थोड़े टाइम के लिए बंद करनी पड़ेगी। But in the sense, I will have to leave the stream for a bit, which I don't want to do. That's why uh, I'm trying to like just make do with this. What a save! What a save! What a save! Yes, yes, yes. I know. I think there's some issue with like I don't want to restart my laptop midstream, man. It will take about 2 minutes for me to come back. I think around half time, what we can do is, if you can just bear with me, अगर आप थोड़े patience रखोगे, तो half time के वक्त मैं एक बार stream restart करके वापस आ जाता हूँ। इन द सेंस लैपटॉप रीस्टार्ट करके वापस आ जाता हूँ, तब तक थोड़ा सा बेयर करो। uh, उत्कर्ष कह रहे हैं कि व्हेन विल द मेंबरशिप स्टार्ट। उत्कर्ष, बहुत ही सून। आई थिंक आई एम जस्ट फिगरिंग आउट व्हाट शुड आई ऑफर इन द मेंबरशिप, और उसी के वजह से मैं ये थोड़ा कर रहा हूँ। पर या आई थिंक बाय दिसंबर आई थिंक यू कैन एक्सपेक्ट द मेंबरशिप टू स्टार्ट फ्रॉम दिस चैनल। थैंक यू सो मच उत्कर्ष। लिलीवाइट्स इंडिया कह रहे हैं कि आई कैन शेयर माई स्ट्रीम यार्ड सब्सक्रिप्शन। लिलीवाइट्स, थैंक यू सो मच। आई थिंक यही सारी चीजें जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक दूसरे को जो हमारी एक कंटेंट की जो एक टीम है, कंटेंट मेकर्स की जो एक कम्युनिटी है, वो एक दूसरे को जैसे हेल्प करती है। तो थैंक यू सो मच लिलीवाइट्स इंडिया। आई विल डेफिनेटली रीच आउट टू यू इफ आई नीड एनीथिंग। सो थैंक यू सो मच। सॉन को नंबर 9 पे खिलाना बहुत ही सही है। यस आई अग्री। ही इज ओके। वेट, व्हाट अ गोल! Hey, it's he's onside. Oh, whew, just ah, that's just just offside.
I think that shoulder. Nah, just offside, just offside. Will hand count? Unfortunately not. मैराडोना का होता तो चल जाता, पर इसका नहीं चलेगा. Just off, like I said, very, very tiny margin. But irrespective of that, man, it's breathtaking currently. और इतना स्पेस अगर हमें मिलेगा चेल्सी से तो ओ बिसुमा ब्यूटीफुल. It's my just a second. My prediction was 3-1. Uh, let's see how it goes now. Beautiful. Oh, hard luck, Madison. Hard luck, hard luck. लिली वाइट्स कह रहे हैं धक धक हो रेला है. आई नो सेम. गाइस प्लीज मुझे बताओ कि स्ट्रीम थोड़ी बीच बीच में अटक रही है क्या? बिकॉज मेरे स्ट्रीम यार्ड के जो ऑप्शंस है वो डेफिनेटली थोड़ा बीच बीच में स्लो हो रहा है. अगर स्ट्रीम अटक रही है तो मैं हाफ टाइम के वक्त uh, आप हाफ टाइम तक थोड़ा बेयर करो मेरे साथ. हाफ टाइम तक हम मैं एक बार जल्दी से लैपटॉप रिस्टार्ट करके आई जस्ट कम बैक ऑन दिस स्ट्रीम. या. Do you see a future for Richarlison at Spurs? Johnson much better at wing and Son working well as a number 9. What is this? Great one. Hey, he took the ball, man. I hope that's not a red.
Oh, come on. I don't think you can give it a red, man. He did not even touch him. अगर ये रेड रहता तो फिर हैवर्ट्स को 5 रेड मिलने चाहिए थे. गैरी सैंचेज को जब तक बॉल जाएगा पीछे, ही इज अ वेरी वेरी बैड डिस्ट्रीब्यूटर. We can create a lot of pressure on them. I don't know what is the plan of Chelsea here. Excuse me, I really don't understand कि Chelsea का plan क्या है यहाँ पे. But हम almost 20 मिनट तक पहुंच चुके हैं. जितने भी लोग इस स्ट्रीम पे पिछले हम 50 मिनट से स्ट्रीम पे. सो प्लीज स्ट्रीम को लाइक करो गाइस. अगर कोई सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक इस चैनल को, तो प्लीज सब्सक्राइब करो. मैंने देखा है कि अबाउट 50% ऑफ द पीपल हु वॉच माई स्ट्रीम डू नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल. सो प्लीज सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया हुआ है सब्सक्राइब ऑलरेडी. और इशरत कह रहे स्टर्लिंग डिड नॉट मूव अवे इट कुड बी अ सीजन एंडिंग टैकल. यस, आई एग्री. वही है आई थिंक. इस साल अगर आप इंटेंट के लिए रेड कार्ड नहीं दे रहे हो, अगर आप गलती से, मतलब शायद वो टैकल खराब हो सकता था, उसके लिए अगर रेड कार्ड अगर आप देना चालू चालू करो, तो दैट वुड बी रियली. देन मतलब फिर आपको आर्सेनल को टॉटनहम के अगेंस्ट एक रेड कार्ड मिलना चाहिए था. हैवर्ट्स को एक रेड कार्ड मिलना चाहिए था अगेंस्ट न्यूकासल. सो दैट्स अबाउट इट. Such a stupid goal to concede, man. Handball, handball, handball. Oh, come on, it has to be a handball. अगर वो हाथ नहीं लगाता है तो बॉल पीछे जा रहा था, उसने हाथ से बॉल आगे धकेल दिया है, तो दिस क्लियरली इज अ हैंडबॉल. दिस बॉल वाज गोइंग बिहाइंड हिम अदरवाइज. दिस हैज टू बी द हैंडबॉल. आई थिंक ये हैंडबॉल दे जाएंगे, मिला जाएगा. यस. कम ऑन, कम ऑन. Guys, my camera has just stopped. Just give me 1 second. My camera has stopped. Give me one second. Yeah. Too many things happened there, man. ऑलरेडी अ ब्लॉकबस्टर मैच. यस रजनी, जैसे मैंने कहा था ये ब्लॉकबस्टर ही होने वाला था.
कैमरा मेरा जो है अनफॉर्चुनेटली गाइस बार बार ये हो रहा है। आ, हमारा एक और कंटेंट क्रिएटर दोस्त फुटबॉल ब्लडी हेल का जो कंटेंट क्रिएटर है अनिमेश, ही विल बी ज्वाइनिंग द स्ट्रीम वेरी सून। तो जैसे एक बार वो आ जाते हैं, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट क्विकली get out of the stream and come back again. And yes, I agree. Romero has that bad bone in him. उसको हमेशा ऐसे थोड़ा सा रफ खेलने की आदत है। चेल्सी के अगेंस्ट वो थोड़ा ज्यादा निकल के आता है। हमने 2 साल पहले भी देखा हुआ था जब कुकुरेया के साथ उसने कुछ किया हुआ था। लास्ट सीजन इट वाज लास्ट सीजन। इट वाज हैंडबॉल। गुड वन, कम ऑन। ब्रो आई थिंक बहुत ही नर्वी हो रहा है गेम, ये बहुत ज्यादा नर्वी हो रहा है फॉर माय हार्ट। फ्रॉम वेयर डिड यू मेक दिस बिटमोजी? एप्पल का है यार। आई आईफोन, मैक, कहीं से भी आप बना सकते हो। पोरो नीड्स टू टाइडी अप हिज एक्ट। यस आई एग्री। दोनों बार वहां से अटैक आया है एंड दे हैव कम वेरी क्लोज टू स्कोरिंग फ्रॉम दैट साइड। पोरो रियली नीड्स टू बी बेटर, स्पेशली जब रोमेरो आगे बढ़ जाते हैं इतना। और रोमेरो का भी आज थोड़ा गेम में हेड नहीं लग रहा है मुझे। लाइक ही इज मेकिंग स्टूपिड डिसीजंस लाइक दिस हेडर नाउ। शुड हैव क्लियर्ड इट वेल। पीछे इज नॉट। या गुड वन बाय पेड्रो पोरो देयर। इविल गेमर कह रहे हेलो ब्रदर। हेलो ब्रदर, आई होप यू आर डूइंग वेल। बाबा उनके स्ट्रीम पे बोल रहे हैं कि रोमेरो को रेड मिलना चाहिए था। आ, देखा उन्होंने नहीं। आ, व्हाट आर वी प्लेइंग? व्हाई? ऑफसाइड। नो इट्स नॉट ऑफसाइड। हम क्या खेल रहे हैं ये? व्हाई आर वी लूजिंग आवर हेड्स?
ब्रो मुझे कुछ कहने का मन भी नहीं हो रहा है। हम We have let our heads go out of the game. I don't think this is an offside. क्योंकि I think Pedro Porro plays him onside. I feel he is offside. I think they're gonna get a penalty for sure. I feel he's played the ball. I know that he catches him, but he plays the ball. मतलब मारने के बाद पैर पीछे थोड़ी लेके आ सकता है कोई. He hits the ball. He catches him on the follow through, very close, can go anywhere. Like he hits the ball. I think it's a penalty and a red card. It's a bad follow through. My God. We had started losing heads much earlier in the game. Now who goes? Brennan Johnson comes off. Wow. Wow. The next three games, the next three games is Wolves, Aston Villa, and Manchester City. We have Eric Dyer against Manchester City.
रोमेरो हैज बीन सो गुड दिस सीजन, हमने आज ही उसके बारे में बात किया एंड देन ही डज दिस. Oh, almost saved. Ah, we have made this game tougher and tougher for us unnecessarily. Come on, keep your heads, man. Keep your heads down. Come on, keep your heads down. Keep your heads in the game, guys. Offside, 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 offside. So if I barge in on a defender trying to clear the ball and portray it as a foul on me, it's a red for the defender. That's not what happened actually. He just went for the ball. Romero hit the ball, but cuts up anywhere above the ankle generally is a red. हमने ये पहले भी बहुत बार देखा हुआ है होते हुए. So I won't contest much about. I won't talk much about this decision. Romero should have known better. But उसके पहले ही the way we lost that ball in the midfield because of a wrong pass, we just don't look in the game. पहले एक 15-20 मिनट के बाद हमने उनको गेम में आने दिया है कंटिन्यूअसली. 2-3 गोल वो आराम से स्कोर कर सकते थे वहां पे. Anywhere near shin or an ankle is a red card. Yes, I agree. Keep the ball. Keep the ball. Just stay calm. Why the hell are we playing Eric Dyer? हमारे पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है ना. uh, who will play in the centre back? Eric Dyer is the only centre back that we have.
Come on, go, 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 go. गेम में क्या चल रहा है मोहम्मद? गेम में फुल मारामारी शुरू है फिलहाल। टॉटनहम को एक रेड कार्ड मिल गया है, रोमेरो को। पेनल्टी के वजह से चेल्सी ने फिर गोल स्कोर कर लिया है, इक्वलाइज कर लिया है। फिलहाल 1-1 शुरू है। हाफ टाइम कांट कम एनी सूनर बिकॉज आई थिंक हाफ टाइम के बाद थोड़ा हमारा गेम स्टेबल हो जाएगा। बट लुक्स लाइक पोचेटिनो हैज गॉटन हिज a yellow for Ange for what? सॉरी फराज भाई, मैंने आपका नाम गलत ले लिया। Everything that could go wrong is going wrong in this game. Murphy's Law is playing on full swing at this game currently. Guys, one of our friends is also joining the stream from Football Bloody Hell. वो जैसे आ जाते हैं हम एक काम करेंगे, थोड़े टाइम के लिए मैं लैपटॉप रीस्टार्ट करके इमीडिएटली वापस आ जाता हूँ सो दैट आई थिंक हाफ टाइम के वक्त ही चले जाता हूँ मैं, सो दैट वी कैन। अब द चल कह रहे हैं लियो मेसी। आई रियली होप दिस ड्रीम वुड लास्ट लिटिल लॉन्गर आफ्टर ऑल दीज इयर्स। लिली भाई, इट्स टू अर्ली टू से, आप ज्यादा सोचो मत इसके बारे में। एवरीथिंग विल गो द वे इट हैज टू। कभी ना कभी तो हारना था, जैसे स्वाप कह रहे हैं, करेक्ट। दिस दैट वाजंट अ रॉबरी, इट वाज रोमेरोज मिस्टेक, आई टोटली अग्री। हम लोग आई थिंक वो गोल से 5-10 मिनट पहले से ही हमारा गेम में से दिमाग, लाइक वी हैड स्टार्टेड लूजिंग आवर हेड्स फ्रॉम दैट गेम। मिडफील्ड में स्पेशली बहुत गलतियां होना शुरू हो गया था बिफोर, लाइक एटलीस्ट 10 मिनट्स बिफोर दैट गोल। नाउ इट्स माय गॉड, वैंडेविन्स hamstring, वैंडेविन्स hamstring, it's gone. That hamstring's gone.
I don't know what to say, man. I really don't know what to say. Højbjerg is coming because of that. Madison's going. I think my problem, Gautam is कि अगले 3 मैचेस हमारा डिफेंडर कौन होगा? एरिक डायर, डेफिनेटली yes. Who's going to be the second one? This is where the that everybody has been saying this season so far कि टॉटनहम को अगर इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को इंजरी होती है तो क्या करेंगे, और मिकी वैंडेविन हमारे सीजन के इफ नॉट द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स रहे हुए हैं. गुड वन एरिक डायर, गुड वन, गुड वन. Ah, if you still manage to get something out of this game, hats off to these players. But this game looks like we have already lost it. Uh, it's going to be extremely difficult to salvage anything out of this game now. आदर्श कह रहे हैं टाइमर्स रोक दो. भाई ये टाइमर डायरेक्टली चालू है फोर्टमॉप से. सो जब भी मैच रीस्टार्ट होगी तो ऑटोमेटिकली 46 से वापस स्टार्ट हो जाएगा. सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. ट्रूथ हर्ट्स कह रहे हैं मार्क माय वर्ड्स, स्पर्स विल विन टुडे. इफ यू मैनेज टू गेट एनीथिंग आउट ऑफ दिस गेम इट विल बी अ मिरेकल. जिस तरह से इस गेम चल रहा है अभी, एवरीथिंग दैट कुड गो रॉन्ग हैज बीन गोइंग रॉन्ग. हमसे मिस्टेक्स हुई है बहुत सारी. इंजरीज अननेसेसरीली हो गई है. रेड कार्ड मिल गया एक. 12 minutes of added time is a huge time, and we just need that half time sooner. हमें जितना जल्दी हो सके उतना ये हाफ टाइम की जरूरत है अभी. आह, किसकी नजर लग गई है यार, पता नहीं. बहुत ही खराब लक हमारे लिए ये. एंड आई रियली डोंट नो व्हाट टू से. बाय मैन, गॉट अ क्लास इन द मॉर्निंग. शुक्रिया भाई आने के लिए. एंड आई होप हम जीत जाए इस मैच को, एटलीस्ट ड्रॉ निकाल ले, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट. आप जब देखोगे सुबह उठ के, आई होप द रिजल्ट इज इन आवर फेवर. पंकज कह रहे हैं स्टॉप द काउंट. यस, दैट हाफ टाइम विसल कांट कम एनी टाइम सूनर मैन.
जिस तरह से ये गेम स्टार्ट हुआ था, द पहला 10-15 मिनट, द वे वी वर प्लेइंग, द वे वी वर बिल्डिंग अवर अटैक, वो सॉन का सेकंड गोल जो स्लाइट ऑफसाइड के वजह से चला गया, वी एंटायरली लॉस्ट आवर हेड्स आफ्टर दैट मोमेंट। 20 मिनट के बाद, 20वें मिनट के मार्क के बाद, आई थिंक गेम में मुझे टॉटनहम दिखी नहीं है। टॉटनहम बहुत ही शॉडी, स्लॉपी फुटबॉल खेले जा रही थी। दैट्स अ गुड बॉल। यार रो नहीं रहा हूं मैं, तो बस आई थिंक हम नहीं खेलेंगे डिफेंसिव। प्रॉब्लम ये है कि हम जितना डिफेंसिव खेलेंगे उतना we will attack more and more pressure from them and will definitely concede. You can't trust this defense a lot. और एक मिनट। हाय अनिमेश, आई एम सो सॉरी, आई डिडंट सी यू कमिंग एट ऑल। आई होप ज्यादा टाइम नहीं रुकना पड़ा। नहीं, अच्छा अभी आ गया। नहीं नहीं, don't worry, it's my laptop has been so challenging यार, ये लास्ट 3-4 दिन। मतलब बर्थडे के दिन अच्छा। से नसीब ही खराब हो गया, मालूम नहीं क्या हुआ। एक तो लैपटॉप गिर गया, गलती वो लाइट गिरा लैपटॉप पे, लैपटॉप गिरा नीचे। ओह शिट। उसके ओह पहले ये शिट तब शिट हुआ शिट। तांडव, क्योंकि एफपीएल का वीडियो रिकॉर्ड किया था, मतलब 6 घंटा अपलोड ही या नहीं हुआ यूट्यूब पे, नहीं क्या हुआ। और उसके बाद ये सब, हाँ एनीवे, मोर इंटरेस्टिंग स्टफ या हैपनिंग आपके गेम में। यार, can't tell you what's happening. It's, as you can see, it's very very bad currently. uh, एक रेड कार्ड रोमेरो को। हमारा देखा मैंने पूरा, गेम, मतलब या या आई थिंक 20th मिनट के बाद हमारा गेम से पूरा दिमाग हट गया था। आई डोंट थिंक वी ट्राइड इनफ आफ्टर दैट। मैं हॉटस्टार यू पे थिंक, हुआ बाय द वे अनिमेश। हाँ मैं भी हॉटस्टार पे, इसलिए मैं थोड़ा वही सब सेट करके आ रहा परफेक्ट था। यू थिंक कि परफेक्ट यार परफेक्ट इन अ परफेक्ट। डर्बी लाइक दिस, यू हैव टू शो अप विद सो मच इंटेंट, इतना पैशन कंपोजर। है, स्पर्स टॉप ऑफ द टेबल, यू थिंक यू केम इन टू या अग्रेसिवली और टू चार्ज्ड अप? ब्रो, आई थिंक पहले 15 मिनट अगर तू गेम देखेगा तो इट वाजंट दिस बैड। हम्म द डिफेंस, द मिडफील्ड, वी वर नॉट मेकिंग लाइक अननेसेसरी स्टूपिड फाउल्स। आई थिंक वी लॉस्ट आवर हेड्स आफ्टर दैट। सॉन्स गोल काइंड ऑफ डिड नॉट स्टैंड। हम्म जो सेकंड मतलब जो सेकंड गोल जो था सॉन का, वो ऑफसाइड की वजह से जो मतलब रूल आउट हो गया, उसके बाद आई थिंक वी लॉस्ट आवर हेड्स। I mean, I saw Son's goal again, unlucky, but वो marginally offside था technically, बहुत unlucky, या लेकिन I feel like these या again similarly Sterling का जो गोल था, yes offside. हाँ। um, why does Sar get a yellow card there? He literally only tried to stop the fight the whole time. दोनों, आई थिंक सार फॉट विथ कॉलविल डेफिनेटली। हाँ, पर जैक्सन ने खींचा, कॉलवेल ने से बॉल खींचा, सार just या pushed him हाँ, सार pushed him then second time, ठीक है, okay, वो सार देखा या नहीं मैंने। नहीं यार, I like the way आई all थिंक were इवन इन playing. द स्ट्रीम, इवन इन हम्म दिस स्ट्रीम, आई थिंक दोनों हॉटस्टार पे हम, आई थिंक, बट स्टिल आई थिंक यू आर जस्ट लाइक 5 seconds ahead of mine. तो ठीक है, I'm very good at not reacting to things because I'm a United fan. कुछ रिएक्ट करने को ज़्यादा होता नहीं है, तो ऐसे ही चला रहता है पूरा गेम। इसलिए तो मैंने वॉच या अलोंग छोड़ दिया है, मतलब 9 2.5 hours will be this phase or this phase.
Bro, this is my only second watch along और I think ये गेम के बाद मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं वॉच अलॉन्ग थोड़ा टाइम के लिए रुका के रखूंगा। फर्स्ट गेम था ल्यूटन के साथ, हमें रेड कार्ड मिला उस गेम में। बिस्सुमा अरे को बाप रेड रे। कार्ड मिला था। सेकेंड गेम अब मैं वॉच अलॉन्ग कर रहा हूँ। जस्ट सेकेंड है, ये मेरा कैमरा का थोड़ा इशू हो रहा डोंट वरी अबाउट इट। तेरा ऑडियो बराबर है, लेकिन ऑडियो आ रहा है। है। एंड या एंड ये सेकेंड गेम रोमेरो को मिल गया है, तो आई एम जस्ट लाइक वरीड अबाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ ए दिस इज मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्यों अभी ये क्या गेम है, कुछ ठान लिया क्या वो लोग ने, अभी हर चीज बाहर चेक करेंगे। आई थिंक तुम लोग का कुछ एनएफएल के साथ कॉन्ट्रैक्ट है ना, सो दे ट्राइंग टू मेक इट एन एनएफएल गेम, दे स्टॉपिंग इट एवरी 30 सेकंड्स फॉर सम चेक। क्या हुआ? एनएफएल आई के एम साथ लिटरली लुकिंग कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, यस। एट, I know his elbow was there, but he's not done anything like that. He's just like jumping with या the या ball, या या right? बट ही फेल डाउन विद द फेस, नो मतलब होल्डिंग हिज फेस, तो आई थिंक दे वर जस्ट चेकिंग कि मारा या नहीं सच्ची। Udogi, to be fair, I mean, I have him in my FPL team, so I'm very happy. वो रेड कार्ड नहीं था, लेकिन बॉस, if it was, या I think a Saturday kickoff game now of the Premier League, if this was a Saturday kickoff, I think that या would have been a red card. I think the pressure of the situation. या अरे सो मैं वही कह रहा हूँ कि शायद वो उडोगी को रेड कार्ड मिल सकता था, ठीक है। हम्म, फिर उसके बाद उन्होंने एक गोल किया जो ऑफसाइड हो गया। उसके बाद हम्म, उनका जो सेकंड गोल हुआ वो ऑफसाइड, लेकिन सेम प्ले में फिर उनको पेनल्टी मिल गया। हम्म। इट्स बीन जनरली हम वो 20 मिनट मार्क के बाद हमारा गेम में हेड रहा ही नहीं है बिल्कुल भी। Why wasn't James given a red? I don't think there was no movement of the elbow. Why? Because it wasn't Casemiro. वो Casemiro होता तो हो जाता रेड कार्ड। नहीं, but Alok is right. He's that very natural, Yeah, instinctive, like just trying to shield yourself while being on the ball. So as a defender. yeah. आदर्श कह रहा है कि मैं एक बार्सिलोना सपोर्टर हूँ और इसीलिए मैं बारसा की टीम स्ट्रीम्स नहीं देखता, क्योंकि जब देखता हूँ तब हारती है। लाइक रीसेंट एल क्लासिको एंड लिवरपूल कम बैक एंड द इनफेमस 8-2। आह, क्या I कहूँ अभी। mean, मैं जनरली स्ट्रीम्स बहुत रेयरली देखता था पहले, अभी खुद hmm, करना चालू कर दिया हूँ, तो आई फील कि माय स्ट्रीम्स, ऑल्दो माय चैनल हैज बीन रियली लकी फॉर टॉटनहम, hmm, माय स्ट्रीम्स आर डेफिनेटली नॉट, क्योंकि दोनों स्ट्रीम्स में रेड कार्ड मिल गया यार। दो ही स्ट्रीम्स किए मैंने, ल्यूटन hmm. और ये अभी वाली। दोनों मैचेस में फर्स्ट हाफ में रेड कार्ड मिला है। आई फील स्ट्रीम का कुछ तो करना पड़ेगा। बट या लेट्स जस्ट टेक अ फ्यू कमेंट्स मैन। अलग भाई, वी एंड प्लेइंग स्पर्सी बट आवर लक बिकमिंग स्पर्सी। आह, व्हाट डू यू थिंक अनिमेश के टॉटनहम इस गेम में आई थिंक ऑफ कोर्स फेवरेट्स की तरह आए थे। जिस तरह से गेम स्टार्ट हुआ, पहले 10-15 मिनट गेम हमें बहुत ही ओपन स्पेसेस मिल रहे थे। इट फेल्ट लाइक वी वर गोइंग टू स्कोर लाइक 4-3, आई मीन 3-4 गोल्स। After that, it felt like we just lost our heads in the game. We didn't feel like we were uh, like keeping our like, composure. जैसे तूने कहा अनिमेश कि when you play a derby, of course passion intent is something very important, but I think the most important thing is composure. जब Hmm. आप आपका टेम्परामेंट रखते हो, आप ऐसे स्टूपिड मिस्टेक अगर करते हो, तो फिर यू विल ऑफ कोर्स ऑलवेज face the brunt of it, and that's what happened. After that Son's disallowed goal, I think we just lost our heads. उडोगी को शायद रेड कार्ड मिल सकता था, लकीली नहीं मिला। फिर उन्होंने एक गोल स्कोर किया जिसमें ऑफ कोर्स ऑफ साइड करार दिए गए थे। आई थिंक इट वाज स्टर्लिंग्स फर्स्ट गोल। Hmm. निकोलस जैक्सन, आई थिंक ही स्कोर्ड। नहीं, इट वाज Hmm. स्टर्लिंग ओनली। Sterling. देन It was सेकंड Sterling. स्टर्लिंग, या स्टर्लिंग का गोल डिसअलाउ हो गया था। उसके बाद वो वापस आ गए, सेकंड गोल मतलब उनका बाद में फिर वो गोल डिसअलाउ तो हो गया वापस एक बार, लेकिन पेनल्टी मिल गई जो रोमेरो का, अगेन स्टूपिड मिस्टेक टू डू मैन। रोमेरो इस सीजन अब तक बहुत ही कंपोजर के साथ रहा है, बट दिस इज व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम रोमेरो जनरली। He's an aggressive player. Na, Alok, see, you like him या because he goes all in a big या game.
against Arsenal, against Chelsea, like Derby hai, he has shown up with intent. Like I Yeah, said, the aggression you need. But problem वही हुआ कि I feel, United after our disallowed goal, Garnacho ka, you lost our head. yeah, But in our case, it was so late, we lost two goals. Now, we conceded two against Arsenal in the yeah, 89th minute and 92nd minute, 93rd minute. Okay? For you, I yeah, think this outside goal happened too early, where it's at home. The crowd also got a little frustrated. They were already yeah, a little nervous after Udogi. Means your crowd was not. See, yeah, your atmosphere didn't change. They were still loud and they were backing you. But players sense yeah, that sudden unease. And I felt that uneasiness got into the players after that disallowed goal. And just escaping a red card, वो थोड़ा चल गया. yeah, And when you get shaken like that, like you said, this is where I feel like a Pochettino knows your home crowd. They know how your fans actually are, right? I think he just tweaked the formation a little bit. I think he just changed a little bit where he just pressed at you guys more, sensing कि तुम लोग थोड़ा you didn't become bad. I don't think y'all played that badly. Y'all should have conceded some four yeah, goals apart from the red card. You just yeah, suddenly got a little defensive. You suddenly got a little restrained. Like क्या करे अभी थोड़ा काम करे कि नहीं करे. And in that overthink of yeah, being calm and not being calm, this all happened in that passage of play. I think वही हुआ. yeah. I don't think it's like I one get very it. easy to make. It's a series of things that happened over a few minutes very quickly where it shook up your team's structure. Yeah, I agree. Uh, Mistakes सोचना चालू हो गई, like you said, we couldn't see what they were trying to do. मैंने मेरे सारे प्रीव्यूज टीम्स में भी कहा था, निमेश है, आज मैंने जो मेरा प्रीव्यू वीडियो कहा है उसमें भी कहा है कि चेल्सी का मिडफील्ड जो है प्रोबेबली सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट टू टॉटनहम है फिलहाल. एंड वो मिडफील्ड बैटल वाज ऑलवेज गोइंग टू बी सो इम्पोर्टेंट. एंड इफ यू सी दैट गोल which they will show, of course, we lost the ball in the midfield because of a absolutely stupid pass. And from there, we started getting more and more pressure in the box, which I feel is really unlike Tottenham this season so far. But I think it is a wake up call. I feel ये होने ही वाला था कभी ना कभी. True, I Uh, feel, तो yeah, you're right. I feel this is what I was telling Sunil हमारे एपिसोड पे, if you saw that ना, कि मुझे लगा था ये गेम yeah, शायद ड्रॉ होगा because I feel कि the right person on the opposite end is there, unfortunately for you ना Pochettino. उसको भले yeah, squads have changed, times have changed, but he knows something about making this team tick, at the stadium. I saw the yeah, pass. Very poor pass, you're right. yeah, I mean, yes, Romero still shouldn't go in like that, but I mean, you put the guy in a position to make a mistake by putting a poor pass, right? Like basic 101. yeah. Very bad pass. Again, I feel like the nervousness got to the. Romero had started losing his head even before that, because तुम स्टर्लिंग का गोल देखो, उसमें भी उसने कोलविल को या रीस जेम्स किसी को लात Yeah, मारी थी. yeah, yeah, yeah. What do you think? This is a red card, 100%. Well, if it You, is against me, I would be definitely calling for a red card. But at the same time, I also feel that, like in a follow through, how do you take your leg off? Like, like you have played football, anyways. I'm not contesting that it should be a red card or not. I think अगर ये मेरे टीम के अगेंस्ट होता, अगर मतलब ये कोई और डिफेंडर होता और हमारे टीम के अगेंस्ट खेलता होता और ये सेम होता, तो I would have been crying out loud. Yeah, that's what they are saying right now. If you listen to the commentary, yeah, तो yeah, मेरा two cents Glenn बोलता Hoddle है. is saying the same thing. मैं कि तेरा 2 cents दूं. Glenn Hoddle Can just I said the same thing, that where do you follow through? I don't think that's a red card. And I am only Yeah, going with my instinct that this has happened to Casemiro, which wasn't a red card. And it yeah. also happened recently in the Premier League in the game where the ball, the players, was it a Spurs player only? Or was it No, I तुम don't. लोग के गेम में, Liverpool game में ना? Mm, He won the ball and then his foot rolled over the ball and hit your player. yeah, yeah, yeah. See, I understand if The you situation reversed. Now basically this rolling happened over a, yeah, over Elliot. if it rolls over a ball, I understand basically you have missed the ball completely, No, but no. See, right? if it rolls over the ball, you have got some of the ball. But when your foot is above the I do ball, get it. it's not fast. You're never going to plant it. Your foot is going to hit the ball and bounce off. It's you, but you touch the ball. Yeah, Your intent was the ball. You yeah, touch the ball, right? yeah.
But I feel like when you hit the ball, there's nowhere you can basically hit and take the foot off. No, I agree. For me, but I am putting them under one branch क्योंकि VAR इतना conveniently Yeah, subjective है ना, इसको कुछ अलग ही category बना देंगे. For me, it is yes, if the players come in with an aggressive tackle, was his leg up all the way? It looked like that after clearing the ball. But after he's whacked the ball away, how do you want him to put the foot down? Is your point. And I agree with the same thing. yeah, When no, I'm not talking about the Gusto tackle. Gusto tackle was separate, right? The one I'm talking about is Elliott against yeah, Spurs only, where he rolled over the ball and hit I don't know which Spurs yeah. player. Gusto was almost similar. Similar. I feel कि Yeah, वहाँ पे भी Elliott, if you are giving Casemiro a red card, then it's a red card, then this is a red card. But for me, I still maintain. So I believe none of them are red cards. I'm really truly saying that कि यार फिर कहाँ पे आप रोकोगे? वहाँ पे हर बार subjectivity लाओगे? yeah. It's Havertz did yes, it not was get a red card. injurious, it was sad, it's unlucky that after that the follow through could have injured the player. Yes, the problem I think what made it tough for Romero and Casemiro at least, not Elliot. Elliot I still Yeah, feel is more unlucky because he went over the ball with a stamp yeah, down. Romero and Casemiro were not in control of the tackle at all. After the follow through, also yeah, Romero was aggressively going for through the player. Casemiro was his foot in. But I think I don't think they're red cards. I don't. yeah, Genuinely, neither of those three are red cards for me. In fact, Udogi, Havertz, definitely red cards. If I look at this even now. yeah. तेरे को क्या लगता है? You agree? What do you think? Yeah, see, I get like follow through on the ankle, on the shin. I understand that. Uh, I think it's I don't know, man. I really don't know. I would love to say that, okay, uh, fair. Like there is a consistency at least in terms of how Gusto, how Harvey Elliott got their red card. Romero, of Hmm. course, deserved a red card also in the same sense because follow through में लगा हुआ है. Uh, I still feel this is a little different from Gusto, and I'm not contesting this. I'm not saying that he doesn't. I mean, this red card should be entirely revoked or something of that sort. But I feel it's a little different than Elliott and Gusto, where rolling over the ball, where you basically still misjudge because you don't actually take the ball out. In this particular case, he hit the ball. The defender was just right in front of him, and you can't take your foot off once you hit the ball. So in the follow through, he unfortunately hit him. Uh, did he know that he was doing this? Did he like intentionally went into a tackle? I don't think so. But yeah, it is what it is, man. I won't cry a lot about this red card because a few decisions have gone in favor of us as well. So कुछ ज्यादा तो नहीं कह सकता मैं. What do you think? But yeah, apart from the red card, Adivesh, now there are few changes that have happened in Tottenham now. मिकी वैंडेविन, पहले हम मिकी वैंडेविन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं. Hamstring injury, very bad. Like the moment he like pulled off like that, I knew that he was gone at least for 3-4 weeks now. Yeah, yeah, yeah. Now, problem is that we play Wolves, we play Aston Villa, we play Man City in our next 3 games. Of course, there is one big international break there, but hamstring injuries can be bad. Like sometimes it takes like about 3 to 4 weeks. Sometimes it can take about 6 to 8 weeks as well. Romero is definitely going to miss 3 games. If we appeal, it gets. I mean, and if the appeal gets rescinded by them, it's then basically 4 game span. That means he's definitely missing the City game. I would just see it through. Your tough fixture phase नहीं है, decent fixtures है. Aston Villa is tough. Yeah, Villa छोड़ के I think you can manage, right? Avoid appealing because yeah, looking at how they're saying the red card challenge, the chances of being overturned are very minimal, if at all. yeah, yeah. I get it. सिद्धार्थ कह रहे हनीमून पीरियड ओवर फॉर स्पर्स. हनीमून पीरियड तो था नहीं. मुझे ऐसे नहीं लग रहा है कि ये हनीमून पीरियड था. हनीमून पीरियड आपका 10-11 मैचेस के लिए नहीं चलता. 3-4 मैचेस तक होता है हनीमून आपका. कौन से हनीमून 4-4 महीने चलते हैं यार. आई वुड लव टू गो ऑन दैट हनीमून एज वेल. अनिमेश, यू आर मैरिड. आई एम नॉट.
You are the better person. 4 महीने हनीमून अगर चलते होंगे किसी के, नहीं, I तो I feel would love to get married. no, I don't feel honeymoon phase. I feel honeymoon phase would have been if it was the fourth or fifth game of the season. I think Abhi, this is Yeah, like 11th game week. I feel again yeah, this is a series of unfortunate events for Spurs, but nothing to do with just bad luck or VAR. I mean, some of the own making, like you said, right? Head going off after the disallowed yeah, goal, and obviously a Van der Ven the injury looks bad. I mean, that yeah, essentially leaves you with both your core defenders who've been critical or clinical in keeping you in a good position out at the same time. yeah. And if I'm not mistaken, Acha. Madison also. Yeah, Madison, I think, was just taken off. I think so, because uh, apart from the halftime, we are only allowed to make three substitutions. I mean, three Correct. occasions on which we can do the substitutions. This was the second one before the halftime, with Mickey Van der Ven gone. And I feel that uh, Ange Postecoglou wanted to make our defense a little bit more stronger. Hmm. That's why he removed uh, Madison and got two substitutes in together, so वैसे that भी डाउट लग रहा he है at least might now as well be has, safe. 10 men be safe. yeah, Injured outfield player, take out an injured outfield player rather than another player. बराबर. करेक्ट, या एंड अगर वो सिर्फ एक ही प्लेयर को तब लेके आते बाहर, तो फिर उसका मतलब ये होता है कि अगला लास्ट सब्स्टिट्यूशन जो हमारा होगा, उसमें हमको डेफिनेटली तीन सब्स्टिट्यूट करने पड़ेंगे बाहर. नाउ थिंग्स हैव बिकम अ लिटिल डिफिकल्ट. Hmm. Kukureya is coming now. What do you think, Adimesh? Chelsea has struggled this season so far against teams uh, which basically sit back and Hmm. kind of play a low block. Hmm. Ange Postecoglou is somebody who will generally never play that. But do you think that he should take a page from the likes of Brentford or some other teams which have been successful against Chelsea whenever they put a low block? क्या आपको like, do you think that we should, like, Ange will change his tactics accordingly? I think, yeah, I feel ki the second half now on the verge of starting. I think you'll see Ange dealing with his first mini crisis of sorts, right? Challenging in Yeah, the first half. I think definitely he will adjust your playing style. But what I don't yeah, think he will do is, I don't think he'll become the low block team. I think he yeah, might ask your yeah, team to defend deep, but it's not the same as low block, no? Because I feel yeah, that's not as to your ethos, trying to play that way. And yeah. yeah, जस्ट अ so I'm सेकंड. guessing. स्मान साई कह रहे, सॉरी स्मान भाई, आप थोड़े आई थिंक ऐसे टाइम पे आ गए जब हम थोड़ा हाफ टाइम थोड़ा एनालाइज कर रहे थे और थोड़ा चेक कर रहे थे कि हाफ टाइम हम लोग सेकंड हाफ कैसे खेलेंगे. बट अगर आपने पूरा स्ट्रीम देखा होगा तो वी हैव बीन टेकिंग द चैट वेरी रेगुलरली एंड स्पीकिंग टू पीपल. सो अगर आपका चैट कोई मिस हो गया रहेगा तो आई एम सॉरी, बट विल डेफिनेटली take that up if you just put the message again. Hmm. Let's just take a few comments now that the half is started, and they have started very well. Otherwise, the Chelsea fan पहले अच्छा लग रहा था, but now it sucks that your players are getting injured. Such an exciting team. Spurs is but lucky that international break is coming at the right time. Yes, Mursal Imtiaz. Uh, thank you so much for joining the stream. Firstly, or as a Chelsea fan, I know even like to share such an sentiment from a rival fan. It's really good to see. But yeah, जो है वो है. Uh, Manas is here. What a game so far, guys. पैसा वसूल मैच. मानस तो खुश हर है like somebody else also dropping points बहुत खुश रहेगा. या या मानस लिवरपूल से मुझे ट्वीट पे दिख रहा था क्या लो ग्रेट गेम बट नाउ ड्रॉप सम पॉइंट्स. आई थिंक मानस वहां जाके कुछ जूजू करा के आ गए. नींबू वगैरह घुमा के आ गया होगा मेरे ख्याल से. उसका लंदन का आइटनरी मंगा किधर किधर चल के आया ना उसके स्टेप्स पे फोन पे देख किधर चल के आया. लकीली वो लंदन गया नहीं था तो नहीं गया था. दूर से. या if Dyer could run faster and defend better, he would be a decent choice. He is the last man standing. Eric Dyer, I don't think Eric Dyer trusts himself, but so far he's been decent. Long 45 minutes Animesh. Uh, Very. we can't let I that don't go. want to talk about Daya because I'm like उसका negativity निकलेगा लेकिन honestly he has to establish himself in this game for the next 3 games, right?
He is taking one of the Yeah, positions for sure. उसके पास अभी ऑप्शन नहीं है. yeah, अभी if he wants to make up for yeah, the fact that the manager didn't like him, what better yeah. game Derby and London Derby doesn't get better than him for that to try to cement his place. I agree. लेकिन तू बोल रहा था ना कि हम लो ब्लॉक की बात कर रहे थे थोड़ा उसके पहले. If you Mm-hmm. notice how you started, Mm-hmm. you started a little more defensively compact, but you're not trying to like just block out senselessly. You've kept a structure in which you Yeah. can counter very quickly. Yes. Thank you, Manas. Yes, दोनों चैनल को सब्सक्राइब करो. बेचारा आलोक is Yes. really Like been to the killing it right. with live streams. Let him reach 2000 यार पास में Yes, yes, yes. Yes, please 1.8. फुटबॉल ब्लडी हेल को भी सब्सक्राइब करो. फुटबॉल ब्लडी हेल के आई थिंक आई एम जस्ट चेकिंग कितने 588 सब्सक्राइबर्स पे. हो गए अभी. 588. सो गाइस, आई थिंक इस स्ट्रीम पे ही अभी कम से कम 20-25 लोग हैं, तो प्लीज सब जाके फुटबॉल ब्लडी हेल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से. मैं काम करता हूँ फुटबॉल ब्लडी हेल का जो. वेट वेट वेट. ए मैं तो did you just आई a जस्ट chance? सॉरी, आई एम तो जस्ट nothing टैगिंग was योर. हाँ, मेरा मेरा ना आई थिंक आई एम बिहाइंड 30 seconds फ्रॉम यूएस ऑल्सो. हाँ चेंज जस्ट रीसेट योर लिंक. तो बहुत पीछे चला गया. या और ना मेरा ये ओबीएस की वजह से ना ब्रो, माय दिस स्ट्रीम इज ऑल्सो थोड़ा बीच बीच में अटक रहा है मेरे ख्याल से. ये लाइव के बाद आई ट्राई हेल्पिंग विद ओबीएस चैलेंज. मेरे को भी होता है लेकिन आई थोड़ा फिक्स्ड इट विद द एफपीएस रेट. आदर्श दुबे निकल या. रहा है. गुड नाइट बॉयज, सी यू टुमारो. गुड नाइट आदर्श, गुड थैंक यू नाइट, फॉर गुड बीइंग नाइट, विद आलोक गुड बिफोर नाइट. आई गॉट हियर. It's not easy यार. To यस all the यस fans यस. who are tuning in right now, thank you for tuning in. समझ सकते हैं it's 2:50 on a Tuesday, Monday night, and या. yeah, they are joining us live. Thank you so much. थैंक यू सो मच गाइस whoever's joined in. आई नो कि बहुत डिफिकल्ट होता है इंडिया में स्पेशली ये टाइम पे मैचेस देखना. तो एक कुछ कमेंट्स लेते हैं. अनुज बबुलकर कह रहे हैं व्हाट डू यू थिंक अबाउट मिकी's इंजरी. इट्स अ बैड इंजरी मैन. डेफिनेटली आउट फॉर 4 to 6 weeks मिनिमम. आई एम नॉट श्योर कि उससे ज्यादा भी लग सकता है क्या, बट इट लुक लाइक अ रियली बैड हैमी. ट्रू टेस्ट फॉर एंज. इफ टॉटनहम विंस दिस दे आर टाइटल कंटेंडर्स. इफ दे लूज गेम ओवर. जैसे हम कह रहे थे कि अगर 11 मैचेस आप डिसाइड नहीं कर सकते, अगर हम 11 मैचेस अनबीटन रहे हैं, और अगर आप बोल रहे हो कि वो टाइटल कंटेंडर है या नहीं वो डिसाइड नहीं कर सकता, तो एक गेम का रिजल्ट कैसे डिसाइड कर सकता है. आई फील True. इट्स अगेन टू अर्ली. अगर हम जीतते भी है हारते भी है, इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट द टाइटल. वी शुड जस्ट वेट एंड वॉच हाउ द सीजन पैन्स आउट. No need. Why इसी वही बोलता है ना. Why invite pressure on Spurs? Respectfully मैं वही बोल या. रहा था कि आलोक के साथ we had spoken about this. There's a very different यस. level of a pressure on a Pochettino right now than even on an Ang, right? Poch has more या. pressure, ठीक है. But now या. Spurs, that the fact that they've started well and Spurs have been a top four side. Yes, वो या. trophies का तुम लोग का finals का चक्कर अलग है, ठीक है. But अभी you started well. It's 1-1 still. It's not the end of the world. Maybe hold on to a draw. या. Recalibrate या. thoda, get ugly results in the next two games. You are down या. what, one draw, and you guys have a tendency to beat City, in one match of the season always, right? या. Um, I don't think all's lost, yeah. I think, yeah, या. let's If we manage to somehow salvage get a something. draw out of this game, Uh, it will be a massive result. and like I said, it shows your mettle, right? If you want to be, Yeah. forget title contender, ऐसे सीजन में जहाँ पे न्यूकासल इज शोइंग इन एंड आउट ऑफ फॉर्म, लिवरपूल आर थोड़ा कम Yeah. बैक टू इट, आर्सेनल आर देयर, सिटी आर Yeah. देयर. यू नीड टू विन और गेट रिजल्ट्स इन सच मैचेस, राइट? मैंने वही बोला कि सब लोग बोल रहे हैं कि आर्सेनल आर किलिंग इट दिस ईयर. आई वाज टॉकिंग टू निर्वाण द अदर डे. आर्सेनल फैन है, फॉर एनीवन हु इज वाचिंग. निर्वाण हमारे चैनल पे रेजिडेंट आर्सेनल फैन है, एंड Yeah. उसने वही बोला कि यार सी वी बीन प्लेइंग वेल अगेन द लास्ट फ्यू गेम्स बट वी आर नॉट किलिंग इट. तो आर्सेनल फैन Right. ढंग से बोल रहा है, यू नॉट किलिंग इट, बट as a title contending team in the Premier League or a top four team, Yeah.
You can only be in a title race अगर जो आप ऐसे tough games को somehow you see out a draw when you are no Yeah, chance, or better yet win yeah, against United when yeah, United looked like they're on the counter और हम जीतने वाले थे. They got an yeah, ugly goal and then they capitalized और 3-1 जीत गए, right? Same thing I yeah, feel कि अगर जो in a game like this, if you all see the game out also yeah. great draw, नहीं भी हुआ, it's not the end of the world. I feel it's first Exactly. बड़ा challenge है. Give the players a break. Give less. See, the less pressure you put on your players, the better for the players. ठीक है? As a United fan, I'm saying Yeah, I've seen the pitfalls, but yeah. No, no, I totally agree to you, Animesh. Uh, Irrespective of what happens right now, in terms of, I hope my voice is proper, bro. I'm just हाँ give me a बराबर है. second. नहीं बराबर है. Okay, बराबर है ना? Save. Counter. Come on. ए पीछे पास यार. और लोग तो Bro, I'm बहुत just पीछे like, है. I know. I've refreshed it twice, bro. तेरा गलती से हॉटस्टार लॉग आउट हो गया है क्या? कि ऑन द फ्री वर्जन. नहीं नहीं नहीं. Lily White's India, Udogi MSN are exhausted. Yeah, man. I wanted to say that, but I think आलोक पीछे था तो मैंने बोला नहीं. On that counter when I saw them chasing back from it, एकदम ही Yeah. मरे हुए लग रहे थे. और And Udogi is already on the yellow card, man. um, It's a red card. yeah, sorry. It's I a was red. trying to hold on. Yeah, yeah. It's a And I red. have Udogi in my FPL guys और मेरा wild card भी use I कर have दिया. Udogi in my FPL as well. I have Udogi out, Cash injured, Haaland injured, and one more player. मतलब FPL भी छोड़ I दूँ. have Udogi. This is this is not going to be fun. I feel bad for you, Alok. This is going to be Long a night. Long night. nightmare, long night. I'm just refreshing my Hotstar again, bro. Yeah, I'm at 5502. आदित्य सेठा मेरे बेंच पे है. अरे यार आदित्य इतना लकी है, तू क्या बोलो तेरे को. Aditya is my friend from my Micah, bro. From NBA, and he's a Chelsea fan. Bro, I'm on 5503 now. 5503 now. You're still 20 seconds behind. I'm 5510. Yeah. It's You're 20 seconds I behind. have It's better than. yeah, exactly. ठीक है. I will try to keep my reaction minimal, but chat बोल देगा तो कोई नहीं. कोई बात नहीं नहीं. चैट एक को तो मैं मैंने बोला है कि जब तक और ब्रो मतलब हमारा स्ट्रीम जो होता है ना लाइक द व्हेन वी से समथिंग इट्स ऑलरेडी अबाउट लाइक 3 और 4 सेकंड्स बिहाइंड जब Correct. तक वो रिएक्ट करते हैं उस किसी पे चीज की और मैंने उनको सारे चैट को बोल के रखा है कि जब तक मैं कुछ बोलता नहीं हूँ तब तक आप प्लीज कुछ चैट में डालो मत I'm just like coming back मतलब I'm here only bro I'm just like smoking that's why I've kept the camera नहीं on नहीं मेरे को उस लाइटर का आवाज आ गया. मैं समझ गया. नॉट माय फर्स्ट रोडियो. क्या रे, अच्छा खासा ये पार्मर का गोल ने मेरे को एफपीएल में रेस्क्यू किया था. घिस गया वापस ये -1 से. bro एफपीएल नॉट माय योर एफपीएल योर यार. नॉट माय एफपीएल यार. लास्ट this ईयर के is पूरा this हाई is the worst that 7000 we से. have played this season so far it's an offside आई कैसे सेड मेरे ख्याल से तो आई डोंट थिंक यू गाइस हैव been we have been bad. we I have been still second we have been second best in almost everything that we have played so far this game except for the first 10 minutes hmm, I feel you guys have been very decent. I mean, yeah, I mean, how can you complain? yeah, I mean It's decent but second best moment of definitely madness. I mean, technically, it's not a moment of madness. It's one-off incident which has derailed your game. So, yeah and now they bring Mudrik also who's crazy in his pace
Uh, But at least Enzo तो निकल गया वहां से. मतलब yeah, चलो one holding player is gone. So if your Sar can put in those balls correctly, but there's some scope. 9 men. We have been there जब लिवरपूल 9 men down थे हमारे Hmm. साथ. They had got the second red card around 66-67 minutes. उसके बाद they put all of their men behind the ball. But see how, like, look at the highline, man. Which It's is an what I offside. told you. I don't know if it is right or wrong. ठीक है. But I What know a Ange will save, man. not play a low block. What a save. What a save. Yeah. Man, Vicario is the best goalkeeper right now in the league. I'm sorry to all Allison fans if they are in the chat, but look at the save, man. Yeah. But yeah, like I said, see, look at it right now. Ange is not changed. He's still trying to say, जाके goal मारो, कुछ भी करो. Yeah, But I feel, I mean, तो क्या करेगा? See, if you're Ange right now, what will you do? You're 8 men. What are you going to do? 8 men win the ball, like to the point, right? You're 9 men left अभी. क्या करेगा तू? yeah, इतना defend कर पाएगा? 30 odd minutes, red card, 95 पकड़. 35 minutes. I don't think 35 minutes is possible. क्योंकि it's not for me not possible, not because you lost Romero. You've lost your other yeah, very competent center back responsible to get you here so far ये सीजन में, राइट? तेरी दोनों की पेयरिंग yeah, चली गई है तो कौन ऐसे डिफेंड कर पाएगा? yeah. अभी डायर ने कर दिया तो Uh, भाई कल बना दो उसके लिए, और क्या. Lillywhite India कह रहे हैं Vicario, this guy is making me cry. हाँ, टू Too बी फेयर good. थोड़ा उसके अप्रिसिएशन बात करेंगे. विकारियो हैज एब्सोल्युटली बीन वेरी पिवटल आपके सीजन में. Bro, even Obviously, that penalty he almost saved, huh? Even that penalty he almost saved. touch the one, it just went off the side. He touched it. It went off Yeah. his palm, I think. He went off his palm, hit the crossbar, and unfortunately went in. Hmm. What a great job, Vicario. I had already started counting the minus points for Palma miss. You can understand. मेरे को लगा वो बचा लिया. We're So still trying Udogi to was score. on We're yellow still card, trying. 1 point yellow card. तो Red उसके वजह से card. साला मेरा -2 हो गया. तो क्या आदमी है यार. Ooh. अच्छा अभी सब आएंगे. आई थिंक वार्म अप चालू है साइड पे स्पर्स का. साइड Yeah, पे वार्म Bentancur अप will चालू come, है I स्पर्स guess. का. आई थिंक अभी वो खेलेगा डिफेंसिवली. Bentancur and Skip. प्रॉपरली शटिंग डाउन मिडफील्ड से एकदम ही. तो सॉन अकेला खेलेगा अभी ऊपर पूरा गेम मर के बेचारा. Yeah. जॉनसन नहीं खेला ना स्टार्ट में. Brennan Johnson got substituted for Eric Dyer when Romero नहीं got his सॉरी, red card. रिचार्लिसन नहीं खेला ना वही. तो आई थिंक Richarlison मतलब नहीं अंदर खेला. कोई भागने के लिए चाहिए बेचारा. सॉन को भी, सॉन पूरा फिट तो नहीं खेल रहा. वो तो सबको मालूम है, स्पर्स फैंस को, राइवल फैंस को, कि स्पर्स सॉन इज नॉट फुली फिट. तो आई थिंक उसको भगा भगा के भी कुछ सेंस नहीं बनाता है. आयुष ने पूछा है वाई आर Yeah. स्पर्स प्लेइंग थाईलैंड. आयुष, हमने अभी दोनों ने यही डिस्कस किया कि वी फील के आगे, आई एम नॉट सेइंग कि नाइविटी है कि कुछ नहीं है, वी डोंट नो. ये पहली बार उसको ऐसा चैलेंज आया अभी खेलने के लिए. तो आई थिंक वो खुद ट्राई करेगा कि क्या कर सकते हैं मेरी टीम. इट्स अ चैलेंज इज टू प्लेयर्स के व्हाट कैन यू डू विद दिस. हमको ऐसे ही खेलना है. लेकिन आई फील कि डिडंट वर्क आउट आफ्टर उडोगी. इट वाज ऑलमोस्ट कि यार गोल मार ही सकता. आई थिंक विकारियो ने बचाया आपको. I think that's why Yeah. now he's got these two holding players. I think he's going to switch off the high line and just going to try and shore up. अभी उसके पास ऑप्शन Yeah. नहीं है. वन रेड कार्ड यू कैन मैनेज यार. दो के साथ I think निकल Ange बन का जाएगा. एक Ange के अगर कोई भी वीडियोस कुछ भी अगर if you just check you will realize if you see any of नहीं the previous सॉरी videos आलोक, or his सॉरी interviews. आलोक, हाई लाइन ही है. If you watch what I'm watching now, just see it. Yeah. He's kept a very high line अभी भी. He's Yeah, yeah, just yeah. got He pressure. always keeps high line. Yeah. I just saw that. We are on the half line. We are on the half line literally. Interesting. Sorry, तू बोला था उसका philosophy.
You He read will, about yeah, it. yeah, okay. He will always play high line. He will always play on the front foot, irrespective of what happens. And this is what I like about Ange. Uh, लिवरपूल के साथ जब वो 2 रेड कार्ड मिले थे, they tried to shut the game out. They substituted Salah off, if you remember, and Correct. they went entirely for the draw. तभी भी स्कोर 1-1 था. बराबर अभी यार. 1-1 है. 30 minutes to go. We're still look how compact we are. Uh, great job, Hoyer. Hoyer, I always think that Hoyer looks like you, Animesh. मैं बहुत बार बोला हूँ कि I look like you. About to just say कि देखो लगता है वापस मैं ही हूँ फील्ड पे खेल रहा हूँ अभी. वाइट जर्सी में. यार नसीब इतना है कि करियर चमक रहा है लाइफ में. नहीं यार, आई फील कि Just imagine if Richarlison scores the winner. Richarlison's not coming up now. हमारे सारे substitute खत्म हो चुके हैं. खत्म हो गए. वही मैं बोला था तो कि रिचार्लिसन की बात कर रहे थे उसके पहले, एंड देन दिस सब हैपेंड ना. So you're done for the day. it's either going to be some masterstroke or will concede 2-3 goals. It's scary and exciting both. Exactly. I'm still excited. To be really honest, I'm not scared even now. जनरली जब हम 2-3 ऐसे एक रेड कार्ड के बाद भी मुझे ऐसा लगता था कि लास्ट ईयर स्पेशली जब कॉन्टे खेलता था, सी व्हेन यू अलाउ देम अ लॉट ऑफ द बॉल, you expect you to make at least one mistake here and there. Look how high Vicario is. भाई तू वापस 30 सेकंड पीछे चला गया यार. I don't हाँ, know but to your what point my कि it's एक looking. काम कर दे. एक काम कर दे अनिमेश, your stream just like pause it for like 10 seconds and then start it again. मैं वही कर रहा हूँ अभी. Yeah. I've just stopped it and I'm just gonna wait अभी. A bit better. I just feel कि यार tomorrow ऐसे बोलेंगे कि नहीं ये नाइव था, and you should have done this, you should have done that. Yeah. And कहाँ पे आया मैं? 64-44. Yeah. I am at 64-42. So fine. मतलब 4-5 सेकंड का डिफरेंस है अभी, तो that's fine. हाँ ठीक है, अभी चलेगा. आई डू इधर रिस्पेक्टिव जो भी होगा अभी गेम में. आई थिंक स्पर्स फैंस देख Yeah. रहे हो तो अभी जागे ही हो तो एंजॉय करो. ट्राई टू सी हाउ मच स्पिरिट योर टीम इज शोइंग. Yeah. उडोगी तो मेरे को लगता था अगेन इरिस्पेक्टिव, नॉट मेकिंग एन एक्सक्यूज, बट मुझे लगता है उडोगी वाज गोना बी अ रेड कार्ड एनीवे बिकॉज वी वर जस्ट रीडिंग द कमेंट आउट तभी, राइट? एमरसन उडोगी आर एग्जॉस्टेड. देयर वाज नो वे उडोगी Yeah. इज गोना फिनिश द गेम. वो ही वाज गोना मेक अ स्टूपिड लेट लंजिंग टैकल टू सेव. Yeah. तो अगेन दैट वाज एक्सपेक्टेड. लेट्स सी हाउ यू ऑल शोर अप. आई मीन Yeah. ये चेल्सी को यहाँ मैं पे क्या ही थोड़ी बोल. कॉन्ट्राबैंड की बातें हो रही है. विकारियो भाई, इतना तो मैं पर्पल कुछ से भी हाई नहीं होता. आई थिंक हमारी for the लाइन sake. इतनी हाई है कि हमारी लाइन ही इतनी हाई है कि शायद जो एक्चुअली I thought of a very bad drug joke. So मैं बोलने I वाला था will. कि पहले एक डिस्क्लेमर डाल दे तू नीचे, बैनर पे डिस्क्लेमर डाल दे, फिर जो भी जोक डालना है डाल. खाली पीली लेट लॉन्ग में तेरा बैन भी आ जाएगा. आई फील योर हाई लाइन इज गेटिंग हाई स्टैंडिंग ऑन द सेंटर लाइन. Yeah. And we are so compact. हमारा पूरा पूरा टीम वो सर्कल के अंदर बैठा हुआ है अभी देख. रफली समझो अभी वो सब्स्टिट्यूशन Offline, का टाइम खत्म offside है. again and again. So you have about 32 minutes to go. Still about Yeah. 33 minutes. Yeah. हाँ, एमरसन सबको एकदम शिफ्ट डालना पड़ेगा. ये बापों का शिफ्ट भी चाहिएगा. लेकिन अगर जो ड्रॉ के लिए भी हेल्ड ऑन कर दिया ना, तो ये अलग ही Yeah. आपके लिए, मतलब इट कुड बी अ स्कोरिंग ऑन फैक्टर. Yeah. लार्जरली तो रिमेन्स इशू की यार 3 प्लेयर चले जाएंगे ये गेम में. वैंडरवीन, Yeah. एरो और मैडिसन में भी प्रिकॉशनरी मालूम नहीं है ना. Udogi, बट but फोकस ऑन ये गेम जो आपको फोकस कर सकते हैं टेम्पररी, बराबर है.
Yeah. और क्या ही कर सकते हैं. What a save again. वो आई थिंक वो एफपीएल में बोनस पॉइंट्स मिलेगा विकारियो को बाय डिफॉल्ट 6 देना चाहिए अभी भी क्लीन बिग, शीट प्लस प्लस करके. बहुत, आई थिंक उसने ऑलरेडी 6 सेव कर लिए, तो ज़्यादा तीन हो गया सेव के होगा. 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, बोनस पॉइंट मिल जाएगा. क्या बचा रहे तुम लोग को. लिवरपूल वर्सेस टॉटनहम मैच विद द ऊनो रिवर्स कार्ड. लिवरपूल वर्सेस टॉटनहम मैच विद रिवर्स का. मतलब क्या है, ऊनो रिवर्स करके वापस किसी ने और ड्रॉ फोर डाल दिया. 2 रेड कार्ड है इसमें तो. ड्रॉ फोर डाल दिया उसके बाद, या ड्रॉ टू पे ड्रॉ टू डाल दिया. या. व्हाट डू यू थिंक अनिमेश? विकारियो, टेल ऑफ टू गोलकीपर्स की बात करते हैं. 2 गोलकीपर्स, एक तुम्हारे टीम में आ गया इस साल, एक हमारे टीम में नया गोलकीपर आ गया. ऐसे 2 गोलकीपर्स को उन्होंने रिप्लेस किया जो हमारे दोनों टीम का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है पिछले 10 साल में. डहेया आपके लिए, ऑफ कोर्स लॉरिस हमारे लिए. दोनों गोलकीपर्स हम देख रहे थे कि उनका लेवल थोड़ा सा वेन होते जा रहा था, right? We knew that we needed that replacement to both these goalkeepers. सेम. Onana has come for United. Vicario has come for Tottenham. Totally opposite trajectory देखी हमने इन 2 goalkeepers की. Onana, of course, when he came to United, he came with very high hopes. One of the most sought after goalkeepers in the world. Vicario, not as much a big name as Onana. आधे लोगों को शायद विकारियो जो सीरिया नहीं देखते ठीक से, उनको बिल्कुल. विकारियो के बारे में कुछ पता भी नहीं होगा, राइट? From there, the way Vicario has performed, the way Onana has performed, what do you think? What do you have to say about that? So मेरे लिए आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स वहाँ पे था कि तुम लोग का सीजन जब से चालू हुआ ना, प्री सीजन से तुम लोग का बैकलाइन बहुत कंसिस्टेंट रहा है. उडोगी Yeah, इज समवन लॉट ऑफ पीपल डिडंट नो प्री सीजन छोड़ के. yeah, एफपीएल के मैं बोलूँ ना, व्हाई आई रेफर टू एफपीएल, मैं स्टैटिस्टिकली रिसर्च करना चालू करूंगा तो बिफोर द फर्स्ट गेम आई सॉ कि उडोगी इज गुड चांस कि ही विल स्टार्ट, नॉट नॉट एमरसन या पेड्रो को of खिलाएगा. तो course. बहुत अर्ली साइंस थे कि ही लाइक्स दीज 5 प्लेयर्स, और रोटेशन करेगा भी तो उतने में ही करेगा, ज़्यादा हिलाएगा नहीं. ठीक है, पेड्रो को Yeah, शिफ्ट करेगा विंग पे. एंड आई फील फॉर एनी yeah, कीपर, ठीक है, लीव विकारियो आउट राइट नाउ, कोई भी कीपर के लिए yeah, और कोई भी सेंटर बैक के लिए वो पेयरिंग कंसिस्टेंटली बहुत ही इंपॉर्टेंट है. I yeah, feel in Onana's case, what happened was वो 2 terrible mistakes, obviously against Bayern yeah, Munich, which was the worst thing वो कर सकता था उसके खुद के लिए. ठीक है, yeah, after coming out in the press before the game and saying कि बहुत गुल खिलाएंगे, बेचारा की shot his own yeah, mouth off too soon. So I feel कि yeah, trying to show confidence, trying to rally the fans, वो प्रेशर जो ओनाना पे था वो विकारो पे नहीं था, made Onana succumb to his own mistakes more than anybody else's. But what assisted Vicario, and to be fair, after that assist, he has done very well. Great saves. United ke against also, he's made a few good saves. Derby mein against Arsenal also. I feel the fact that United has no consistent midfield and तो defense की बात करते हैं ना, your midfield has not changed. Very very set midfield the way he wants to play. Sar has played so many games. हमारा same yeah, midfield start नहीं होता. Same 4 defenders, forget 2 center back, same 4 defenders start नहीं होते. I feel yeah, in that case to compare the two keepers is a little unfair to Onana because of just nothing settled. There's no midfield settled. There's no spine settled. No covering defensive midfielder who's sitting like a third center back. कुछ ही नहीं हो रहा है. ठीक है, तो पूरा वो pressure, Champions League football, lights on him. yeah, He succumbed. But as now yeah, purely giving credit to Vicario, as much as they both played 11 games each in the Premier League so far, um, he's not put a step wrong. And backed by the yeah, manager, backed by the fans, looks like a very good shot stopper. थोड़ा कभी कभी yeah, उसके पासिंग में डर लगता है एज अ नॉर्मल वॉच, यू नो, ऑन द एज ऑफ द सीट. He's a little short, don't you think? Sometimes in some passes he's a little short. थोड़ा he yeah, gets a little short
it is passing. That's maybe something he's not forced to do because manager wants to play that way. But like I feel you don't have to play that way, right? United also, I don't know why United plays from the back. Ten Hag has come out and said कि मुझे पीछे से खेलना, I want to play like that. But there's nowhere in the world of football where you should play from the back. Just punt the ball ahead. If you have two solid guys winning the ball for you, you have Hoyland winning the ball for you, you have McTominay winning the ball for you, why not? ठीक है? In your case, ठीक अभी Kane नहीं है. Son is not the most aerially solid. Kulusevski, Richarlison, you don't have it. So I understand in your game again. So I feel कि apart from just short passing, I think Vicario is deserves a lot of plaudits. I feel he's been the keeper of the season so far, better than Allison Yeah. also. And has made a few Yeah, yeah, important saves for Liverpool. definitely. Big clutch saves, huh? Clutch saves for Liverpool in big games when they were struggling. But I feel Vicario's done much better for you guys, Abhi, and plaudits to that. Yes, But yes. Onana just again, he just made too much pressure, made two stupid mistakes, and he should make up for it now. I think he's trying his best. Oh, yeah, yeah. I agree to an extent. But I think if we just talk about just the How do you just tell me goalkeeper's about Onana? impact What do on you the game. genuinely feel? Yeah, I'll just take this chat once. Now someone has to score banger like he did against Burnley, solo goal. Yeah, uh, if we win this game, it will be the biggest compliment to Ange Postecoglou And Pod because should be even fired. after going even after going two men down, he hasn't changed his style of play. He hasn't changed the way we generally set up. We're still playing with high line. He doesn't have his first choice back four right now. It's literally, if you see, Højbjerg is playing as a defender there. It's literally Emerson Royal, Højbjerg, Dyer, and Poro. Uh, it's it's a goal, of course. Hmm. I mean, it was bound to happen, right? This was born to happen. विकारो बोल रहा है मैं इतना कर रहा हूँ तुम लोग क्या कर रहे हो क्या करेगा बेचारा स्किप भी यार अभी कितनी बार यू कुड हैव डिफेंडेड दैट टफ Yeah, it was टफ bound वहां to पे happen, man. हम्म And sorry to say, but I felt this same thing in Tottenham versus Liverpool. I'm a Liverpool fan. What the experience you are experiencing today? कर्मा नहीं बोल सकते आयुष. Uh, it would have been karma if uh, what would you say? Uh, होता है. Part and parcel of the game. Uh, but still, despite that, I'm just really proud of this team that we have not stopped playing the way we play, and to get anything out of this game is going to be really difficult now. Uh, but if we actually manage a goal here, Animesh, that would be a statement. I just don't feel that that goal is coming anytime at all. हाँ like I said the fact that Udogi was off in the 52nd minute and अरे नहीं है अब ऑफसाइड खाली प्लीज स्पर्स फैंस को होप मत दे कितना मुफ्त का वार चेक नहीं करे offside. आज या क्या किसी ने कुछ टेक्नोलॉजी बताने के लिए ऑन साइड बाय मार्जिनली बट ऑन साइड मेरे ख्याल से Yeah, yeah, yeah. आराम से ऑन on साइड side. आराम से on side. I feel कि यार if ये सुलभ गौतम का चैट आया है, मतलब कमेंट आया कि it was more of a heartbreak for Liverpool in that game than Spurs in this game. I agree. कुछ decisions उनके against गए, like कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में. Things are gonna play even themselves out. Luckily, Anivesh, मुझे ऐसे लगता है कि ये game I expected us to lose points. I expected us to lose probably a draw. I did not see. मैं सारे लाइव स्ट्रीम में कह रहा था कि ये मैच हम डेफिनेटली हार सकते हैं बिकॉज हमारे द वे वी सेटअप इज वेरी कॉम्प्लीमेंट्री टू हाउ चेल्सी अटैक्स. जैसे अभी भी आप अगर देख रहे हो, दे प्ले ऑन द थ्रू बॉल्स एंड द पेस. We are still playing very, very, very high line.
can people, like, some people would still say it's stupid. Some people would still say ke, you should like go for a draw in this case, but that's not how Ange plays. वो देखेगा कि मुझे एक पॉइंट से अच्छा है हम 0 पॉइंट्स ले ले चलेगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आई विल स्टिल प्ले द सेम वे. That's my only concern. Not concern as such, but I think we could have approached the last 30 minutes in a different way. But let's see what happens. It's still not over until, like they say, until the fat lady sings. सॉरी मेरे को आई बीन ट्राई नॉट टू टॉक बिकॉज आई फील कि यार आवाज बहुत कट हो रहा है, लैग हो रहा था, बट आई थिंक अगेन लाइक also has been Oh fuck! गोल. अरे मेरा पूरा इंटरनेट चला गया, सब चला गया था. क्या अरे वाह, डायर ऑन साइड ऑन नहीं, he's off. अरे यार, But the ball came off the defender. ना बेंटाकोर. The ball came off the defender, no? बेंटाकोर. Wait, the ball came off Silva. No, the ball came off Silva. मैं वापस आगे चला गया, रुक, इंटरनेट रिफ्रेश हो गया. हाँ बेंटाकोर. ये एंगल से मेरा भी जहाँ पे फ्रीज किया था वो बेंटाकोर ही लगा मेरे को. The ball comes off Silva, man. डिसासी है कि सिल्वा है, दोनों है ना, दोनों खड़े हैं Silva. बाजू में. दोनों मालूम खड़े है हैं, किसका but है? ball comes off Silva. नहीं, ये एंगल से तू देखेगा ना तो अच्छा, they're not looking at that only, they're looking at just the offside of क्या देख रहे, समझ में नहीं आ रहा है. It looked like the ball came off Silva. At least it looked to me. Spurs have the draw, let's go. भाई होल्ड ऑन थोड़ा. मेरे ख्याल से इतना गंदा मार्जिनली ऑफसाइड रह सकता है, तुम लोग का हार्ट ब्रेक हो जाएगा. मेरे बार तो ये बहुत बार हो गया ये सीजन में. ये यूनाइटेड फैन. आई थिंक ये अगर ऐसा चेक करेंगे तो ये ऑफसाइड है, डेफिनेटली वी कैन सी दैट. बट पॉइंट वही है कि ऐसे नहीं करना चाहिए ना. तू लाइन डालेगा तो मुझे लगता है बहुत क्लोज हो जाएगा ये. मेरे ख्याल से जो आई डोंट नो हु द डिफेंडर इज हुज लेग इज देयर, आई थिंक ही इज कुकुरेया. क्या बोला मैंने, गंदा No, मार्जिनल yeah. ऑफसाइड है, सबसे Caicedo. गंदा मार्जिनल ऑफसाइड. I thought the ball came off Silva though. बट कितना कोई चेल्सी फैन है क्या लिंक में? मैं यूनाइटेड फैन बात कर रहा हूँ तो ज्यादा हक से बोल नहीं सकता, लेकिन क्या गंदा टीम है तुम लोग का, इतना अगेंस्ट 9 men डिफेंड नहीं हो रहा है. आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग चेल्सी का प्रॉब्लम क्या है. दे हैव द बेस्ट टू डिफेंडिंग होल्डिंग मिडफील्डर्स. दे हैव ऑन पेपर they have a very set compact defense. I mean, they can easily Yeah. abhi theek hai, I could eat this comment in the next 2 seconds. They could go on to bang 5 goals. It's not unlikely. We were playing against 9 men. But yaar, how they let it get to the stage? एक Poch tactically sound manager है, वो क्या कर रहा है मुझे समझ में नहीं मालूम है. But coming back to Spurs, यार, again plaudits for trying to hold on so far. कुछ तो कर रहे हैं. Yeah, and we're not playing on the back foot, man. We're going for it. Ironically, तुम लोग ज़्यादा safe कभी खेल रहे हो than you were playing with that man on. Your midfield passes are more accurate right now than they were earlier. Bro, Chelsea versus Man United will be a match to watch. दोनों ही नीच फुटबॉल खेलते हैं. Bottle of shithousery. Battle of shithousery. Battle of garbage. कुछ नहीं है. Battle of garbage रहेगा वो game. Battle of garbage. Battle of I don't know, not garbage. Battle of has-beens. दोनों has-been बन गए ये season तो. Yeah.
उन्होंने इतना पैसा खर्चा है, मेरे को लगता है वो पैसे से पूरा मतलब आधा किसी कॉन्टिनेंट का हंगर चला जाता। दोनों क्लब कंबाइन करके तो डेफिनेटली, ऑलमोस्ट 1.8 बिलियन खर्चा किया होगा। या पिछले 2 सीजन में डेफिनेटली। मुझे मालूम नहीं पता यूनाइटेड में कौन सैंक्शन करता है ये नेगोशिएशन हमारे। मैं वही बोल रहा था राइट। सब लोग बोलते हैं कि यार दी साइनिंग्स आर टेन हैक साइनिंग्स, ठीक है, फेयर इनफ, मैनेजर या ने लिस्ट दिया। अभी आलोक तू मेरा पर्सन इन चार्ज है, ठीक है। अभी मैं तेरे को या आके बोलता आलोक मुझे बेल लेके आ, मुझे क्या बोलेगा? ठीक है बेल लेके आता हूँ बट ये प्राइस में। मैं बोलूँगा हाँ ठीक है तेरे ऊपर है। तू मुझे आके बोलेगा तुझे बेल चाहिए था, मैंने उसको तेरा घर दे दिया लोन पे, तो क्या मैं बोलूँगा तू क्या है ना, इट इज योर टू टेल मी व्हाट द लिमिट्स आर। या सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि इसको भी टेन हाग पे वो ब्लेम करना है। तो भाई खुश रहो तुम लोग, क्या बोलो। तुम्हें लगता है कि टेन हाग बैठा रहेगा बोलेगा कि मुझे एंथनी चाहिए 120 मिलियन में, 100 मिलियन में? वो क्या पागल था क्या? उसके पास था जब भी एंथनी ने उसको बोला था कि मैं आया हूँ अभी मुझे मेरे प्लेयर्स चाहिए है। एंथनी वाज लिटरली एट 55 मिलियन पाउंड मैक्सिमम विद एवरीथिंग। अभी हम लोग आई ने थिंक ये यूनाइटेड यूनाइटेड टैक्स लग जाता है मेरे ख्याल से, डेफिनेटली। टैक्स छोड़ दो ना, इट वेंट अप बिकॉज दैट कैप वेंट अवे। Because as या always, we waited for the last moment, like we did with Casemiro. Casemiro जल्दी sign किया होता है, we would have got it for 40 million. We paid 60 million. या प्रॉब्लम वही है ना कि यहाँ पे जो ऊपर है, आर दे एक्चुअली गुड, आर दे कॉम्पिटेंट? मतलब बैटल ऑफ द पोरो शिटीली पोरी रन क्लब्स। बैटल ऑफ द शिटहाउसरी। आई लाइक इट। लिली बाइट्स कह रहे हैं पोरो हैज मुड्रिक इन हिज पॉकेट। मुड्रिक मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है इस गेम में, डेफिनेटली। बट आई थिंक वी हैव लेस टाइम इन आवर हैंड्स नाउ। आई थिंक यहाँ वहाँ कहीं से भी एक स्क्रैपी गोल भी अगर आता है, दैट वुड बी extraordinary feat right now. Oh, Animesh with a nice touch there. हॉयबियर के पास बॉल। मैं समझ गया, मैं ट्राई कर रहा रिएक्ट नहीं करने को। You're still हाँ ahead of what? I am on 84-30. नहीं सेम सेम, फिर भी जस्ट इन केस मार्जिनल है ना, तो भी मैं थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ, लेटिंग यू रिएक्ट या फर्स्ट। नहीं ठीक है, मार्जिनल, इट्स ओके। नहीं मेरे ख्याल से अगेन मुड्रिक सिम्टोमेटिक ऑफ shithousery football run club management. Who in the या right mind बेचारा said Mudryk should be bought for 80 million. बेचारे पे इतना प्रेशर डाला है, इतना प्रेशर डाला है। या देख एंजो भी 100 मिलियन नहीं था, लेकिन उससे मेटल था, वो वर्ल्ड कप प्लेयर है ना, मालूम है हमको। या राइस कैन हैंडल इट, कैसेडो कैन मोर देन हैंडल द टैग, ठीक है। सोबोसलाई देख लो 70 मिलियन, 65 मिलियन पाउंड, 70 मिलियन। या मुड्रिक बच्चा बेचा क्या उस पर डाल के थोक पे डाला है 80 मिलियन प्राइस टैग। सेम विथ सेठिया। हॉयलैंड, हॉयलैंड पे या या हॉयलैंड को 25 मिलियन, क्या मतलब व्हाट आर यू ट्राइंग टू सेट अप दिस प्लेयर्स टू फेल? डेफिनेटली दिस प्राइस टैग डेफिनेटली एड्स अप इवेंचुअली, क्योंकि फैंस प्रेशर ऐड हो जाता है, क्लब का प्रेशर ऐड हो जाता है। मेसन माउंट का जो अभी हो रहा है, सेम चीज। आदित्य सेठिया जो चेल्सी फैन है वो कह रहे हैं भाई तुम लोग जो भी चेल्सी फैन हो और ये बाद में देख रहे हो ना, आफ्टर दिस वीडियो हैज गॉन लाइव, आई रियली थिंक वी आर गोइंग टू प्ले आउट द वर्स्ट 0-0 इन हिस्ट्री, यूनाइटेड वर्सेस चेल्सी, इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री। वर्स देन स्टोक वर्सेस वेस्ट ब्रॉम, ऐसा कुछ भी गेम रहेगा वैसे। ये क्या कर रहे हैं तुम लोग के पास? मतलब दो एक्स्ट्रा मैन है, डिफेंडर ला के आए हो। अबे यार इत्तू सा रह गया। That's what she said. पर yeah, man. See, there are some losses, Animesh, where you feel really heartbroken after those losses, because you generally feel that you play really bad those games, right? Uh, Games like these, when even after going 2 men down, you do not lose your
like style of football. You keep going at it, almost score like Eric Dyer अभी जैसे even Bentancur. आइडिया शुड बी दिस. आई थिंक हम यही करेंगे मेरे ख्याल से. जब भी आई थिंक एक 5-6 मिनट का एडिट टाइम भी मिल जाएगा हमें इस गेम में. जो भी 10 मिनट बचे इस गेम में, आई थिंक व्हाट विल ट्राई टू डू इज take the ball, go to the wings, try to get a free kick and attack from there, because Chelsea clearly are looking really bad defending a free kick. एरिक डायर का वो जो गोल डिसला हुआ वो भी फ्री किक से आया. बेंटांगुर का भी एक चांस जो है वो भी फ्री किक से ही आया था. I think we will try to get as many set pieces as possible. But for that, we need to keep the ball with us. And the thing is, if you press this Chelsea team, they can make mistakes. Huh? But they don't look pretty convincing even right now. मैं वही बोल रहा हूँ, क्या मतलब भाई, which team is playing with 9 men? दिख रहा नहीं है. Red, red, red. अभी के लिए तो येलो दिख रहा है आपने. I think keeper पे you go late, it's by de facto yellow. But they will check. He didn't really put a stamp. He just followed up with his leg against the knee. Yeah. I thought it looked like a stamp from the initial. यूनाइटेड तो ओपन गोल भी मिस कर देगी जैसे परफॉर्मेंस है. मोहक भाई स्ट्रीम पे कह रहे थे यूनाइटेड तो ओपन गोल मिस कर भाई. देगी. ओपन गोल मिस करने के लिए चांस क्रिएट होना चाहिए ना पहले. चांस किधर क्रिएट होने वाला है? कर रहे हैं that हॉलैंड back flip. I think he was doing the Olympics team also. Sorry? 25 meter dive team join करेगा अभी. हम दिखा रहे हो इससे बाद ही straight go to the Olympics next year. मैं वही बोल रहा था, for United to miss an open goal, चांस क्रिएट करना चाहिए ना किसी को. हॉलैंड बेचारा अकेला खड़ा रहता है उधर बॉक्स में. मींस अभी के लिए फिलहाल बेचारा हॉलैंड के लिए चैंपियंस लीग छोड़ के पूरा करियर, उसका प्रीमियर लीग करियर ऑफसाइड ही है. अनफॉर्चुनेट. मैं ऐसा बना रहा हूँ कि यूनाइटेड फैन की तरफ से, मैं यूनाइटेड फैन, बट गाइस इतना मालूम है कि हमारी साइड इतना बेहुदा फुटबॉल खेल रही है अभी. लेकिन पॉइंट यही है कि यू प्ले सच शिटी फुटबॉल, होपफुली यू ड्रॉ आउट द रिजल्ट्स एंड यू गेट टू अ सेम्बलेंस पॉइंट कि यू प्ले गुड फुटबॉल अगेन ना. या गाइस 11 लोग अभी भी स्ट्रीम पे. आई थिंक बहुत सारे जो हमारे जनरली एनिमेज जो मैच देखते हैं रात को, सारे लोग फोन पे मैच देखते हैं. तो आई थिंक मोस्ट पीपल विल कम आफ्टर द गेम टू स्पीक अबाउट लाइक द पोस्ट. मुझे हमेशा वही लगता है लेट नाइट गेम्स, पीपल आर नॉट सिटिंग विद फैमिली आउटसाइड. वो टीवी पे नहीं देख सकते, वॉल्यूम सब फोन पे ही देखते हैं. एग्जैक्टली. तो बस जितने भी लोग अभी भी स्ट्रीम पे है गाइस, स्ट्रीम को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो. और मैंने फुटबॉल ब्लडी हेल का जो हैंडल है वो भी डिस्क्रिप्शन में, एक्चुअली टाइटल में डाल दिया है. तो प्लीज़ सब जाके अनिमेश के चैनल को भी सब्सक्राइब करो जल्दी से. Thank you guys if you all subscribe. Thank you for it. Animesh, one of the oldest probably United fans from in Mumbai, part of the Mumbai Manchester United supporters club, जो official supporters club है. He's been a part of that in actually the kind of the working committee of that of that board. Well, not working committee, क्योंकि working committee वाले तो अलग ही थे. But I've always been on periphery trying to help as much as I can. But ज़्यादा से ज़्यादा तो working committee तो they have been really like doing it. यार सुनील और जो काम करते हैं ना, सुनील और श्याम और ये सब इतने सालों से, अभी कर्ण भाई यार एनर्जी चाहिए सब करने को. You know better than anybody यार, Mr. Chairman, you know better. पर यार ये काम जो तुम लोग करते हो ना फ्री के लिए, इतना काम without getting anything in return. ठीक है, you are getting to sometimes liaise with the club and
be in touch with the club. But Yeah. yeah, hats off to you guys. थैंक्स मैन. लैपटॉप पे दो वेब ओपन करके देख रहा हूँ, कह रहे हैं सुलभ, सॉरी सुमित जी. और इफ स्पर्स गेट अ गोल फ्रॉम हियर, इट माइट boost their season just like the win against Liverpool. Yeah, I get it. Correct. मैं भी वही कह रहा था. लास्ट के आई थिंक ये जो 6-7 मिनट है, 5 मिनट बचे एक्चुअली, 7 मिनट बचे. Very very important. If we manage to even scrape a goal here, that will just give a lot of confidence to this team. I feel कि यार if nothing else, भाई वही we were talking about this earlier in the stream कि स्पर्स जीत भी जाएगी ना यहाँ पे. जस्ट कैसे भी करके, सॉरी स्पर्स जीते भी नहीं ना यहाँ पे, सिर्फ कैसे भी करके डोंट लेट दिस लॉस बिकम अ सीरीज ऑफ 2 See, losses. that's yeah. What I feel is भाई स्पर्स चेल्सी इतना बेहुदा साइड है यार. 9 मैन यार, शर्म करो कुछ. I think but yeah, Son is done. He's exhausted. कोई बात नहीं, 2-1 yeah. 3-1 That's it. 4-1 कुछ फर्क नहीं पड़ता है. Yeah. Yeah, you should not be happy. तुम लोग 9 मैन साले खेल रहे हो भाई, उधर से 2 फीफा गोल मारा है तुम लोगों ने. 2 फीफा गोल Yeah. मारा है और कुछ नहीं. Exactly, FIFA goals है दोनों. Well played, guys. I think Animesh, जो what you were saying before this, वो गोल के वजह से भी, मतलब सॉन के अटेम्प्ट के वजह से भी मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया. मुझे वही कहना था तभी कि if we had dropped our heads in this game, in a sense, after getting that second red card, if we had stopped playing the way we play, और ऐसी थोड़ी चीजें हमें दिखती ना, तो मैं शायद कहता कि we are probably not there in the game, right? But you look at the way that we are still playing, and I'm not saying that Chelsea is a bad team currently, but अगर आप 9 men के साथ अगेंस्ट खेल रहे हो, तो any team can make you suffer, right? Correct. उसके बावजूद अगर टॉटनहम इतने अच्छे से खेल पा रही है, गेम अभी भी बिल्ड कर पा रही है, अच्छे पासेस 2-3 पासेस स्ट्रिंग कर पा रही है एक दूसरे के साथ, still playing the high line, still getting everybody in the game together, still playing the way we are playing, I think that just shows a lot about the metal. Sometimes, like what you said, right, कि अगर ड्रॉ करते हैं तो हमारा मेटल दिख जाता. But I think I'm just happy with this also, man. Extremely great football. We still haven't given up. We're still going at it. लास्ट ईयर कॉन्टे के साथ अगर आप देखते हैं हमारा मैच, तो हमने वो सेकंड फर्स्ट रेड कार्ड के बाद ही हमारा गेम खेलना हम लोग ने बंद कर दिया होता. Yeah. So really proud of this team, man. Eric Dyer, actually, we generally have seen him playing not so good against the pace. If the opposite team had good pace with them, but the way he's played today so far, of course, you can the 2 goals that we have scored is not down to the defenders or their ability or inability to do something. It's down to us being 9 men and still playing such a high line, Correct. which gives them enough room and the space behind our high line to to go past. They have blistering pace in their attack. I think we'll survive. Though that Wolves game, that Villa game,
Hmm. It's going to be another goal definitely. मैं प्लेयर होता तो मैं सेलिब्रेट करता है, ठीक है, अभी इज नॉट हिज फॉल्ट, ही इज डूइंग हिज जॉब, ही इज स्कोरिंग हिज गोल्स, फेयर इनफ, सेलिब्रेट तो करेगा ये. Yeah. Hmm. There are a few Chelsea fans here. Salute to you guys, Spurs. Viper, thank you so much. Gaurav कह रहा है massive respect for Spurs from a Chelsea fan. Thank you so much. Thank you so much. यही मैं अभी कह रहा था, निमेश के साथ हम यही बात कर रहे थे कि ये गेम sometimes you play well and you lose only because of the red cards and all of those things. Hmm. We went down swinging, man. जो कहते हैं ना कि you know that you're going to lose, you are up against a team which can break you down when you are with like 9 men. But I'm glad. I'm glad. I think Ange Postecoglou will learn from this. It might be the redemption of Jackson. नहीं भाई, आदित्य गोपे, मतलब I know that you mean well for your player अगर आप चेल्सी के fan हो. But I think the only reason that Jackson has scored a few goals today is because we are down to 9 men और हम अभी भी हाई लाइन के साथ खेल रहे हैं. That's the only reason. But I feel कि अभी there is still like a couple of minutes left, he should now drop it, because now this goal line could get very embarrassing. Yeah. Now I feel कि Ang should just tell the players to hold back. वो खाली भी इतना घुस के गोल डिफरेंस खाने का जरूरत नहीं है ना. You are right now tight at the top of the Yeah. table. You are right now, today is negative, you are 3 down now on the goals. थोड़ा अभी should just हो गया, ठीक है, अभी तो No, I get 10, it. 20 I get it, Animesh, but I think what I also feel is that title talks were anyway very premature. We are probably just have top like four. top four, and despite what happens, the way we have played today, I think top four should be uh, pretty much manageable. Tottenham Premier League कह रहे हैं कि I am proud of the team. सौम्यदीप नाथ कह रहे हैं सल्यूट स्पर्स. आई फील कि आप शायद टॉटनहम के फैन नहीं हो, आप कोई और टीम को सपोर्ट करते हो, इसलिए आप कह रहे हो. सो यस, अभी बहुत लोग आना शुरू हो जाएंगे. अनिमेश, व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट पॉज द स्ट्रीम अ लिटिल बिट. यस, और मैं मेरा कैमरा सेटिंग चेंज करता हूँ. मैं ओबीएस से निकल के फेस टाइम कैमरा पे आ जाता हूँ. हाँ, वो कर दो, 1 सेकंड, इजीली हो जाएगा. क्योंकि फिर ओबीएस के वजह से बहुत स्ट्रीम ये हो रही है. हाँ, Yes. वर्चुअल कैमरा इशू हो रहा था ना. Yeah, virtual camera. अभी वर्चुअल कैमरा का Yes, थोड़ा इशू हो guys. रहा है, लेकिन quit 100 things. Yes. So guys, 20 लोग अभी स्ट्रीम पे. आई थिंक मेरे ख्याल से अभी लोग और ज़्यादा आना चालू हो जाएंगे. आलोक भाई, नॉट अ स्पर्स फैन बट योर टीम वाज गॉट द डॉग. यस, मैं यही कह रहा हूँ. मैं और अनिमेश अभी यही डिस्कस कर रहे थे कि रेड कार्ड्स लेने के बाद जिस तरह से कोई टीम्स खेलती है, आपको उससे आपकी ओवरऑल टीम की मेंटालिटी पता चल जाती है कि आप ड्रॉ से खुश हो या फिर यू आर स्टिल गोइंग फॉर द विन, या आप still trying to get the maximum out of this game or not. We were not settled with that draw even at 1-1. Even at 2-1 we went for the kill. Even at 3-1 we went for the kill. So I'm really not sad about this result. Unfortunate है, बहुत सारे लोग रात को 3:30 बजे 3:40 हो चुका है, अभी भी स्ट्रीम पे है. मेरा नया जॉब शुरू हो गया है अनिवेश, और आई एम वर्किंग यूरोपियन टाइमिंग, सो आई डोंट हैव टू स्टार्ट माय वर्क बिफोर 2 PM tomorrow, so I'm pretty much chill. ऑफ स्ट्रीम पूछने वाला था नए जॉब के बारे में, बट अभी के लिए फिलहाल Yes, बहुत लोग तो I don't have to worry about that. But अच्छा, जितने भी लोग happy अभी for भी you. है, well played, only sad for Van de Ven and angry at Romero. Yes, Hackerman, I think you're a Tottenham fan since you are angry at Romero. Stupid thing to do. I don't see that one particular tackle, but I think the series of things that built up to that tackle. स्टर्लिंग का जो हैंडबॉल की वजह से जो गोल डिसअलाउ हुआ, उसके वक्त भी उसने एक चीकी लेग मारा था किसी को, उधर से उसका हेड लूज होना शुरू हो गया था. देन ही मिसप्लेस्ड द पास which eventually came back in the box.
for which he got the red card. Thankfully that goal got disallowed, but उसके वजह से उसको red card मिल गया, and eventually we got the penalty and we lost the game. So yeah, Romero certainly definitely at fault somewhere. कुछ comment लेते हैं अनिमेश. I would like love to know your views also on this. Alok bhai, I don't know if Tottenham have that quality players to become title contender, but I'm sure that they have the character to win the league. Yes, Ashish Srivastav ये कह रहे हैं. I think he is not a Tottenham fan. Animesh, what do you think? The character that was shown by the club today or by the players today, even at 9 men down, हम continuously यही कह रहे थे कि कितने compact थे हमारे पूरी team. The entire आपका जो center का circle था at one point, Correct. our entire 3 sets of lines could be seen in those point only, right? हमने Yes. उनके midfield को पूरा game से बाहर निकाल लिया था. They were just trying to put the ball in the wings, get the through balls in. Despite that, Vicario, what a performance. What do you think, man? Do you feel that this team has that character? 100% यार. पहले देख obviously plaudits तो देना चाहूँगा स्पर्स को फिर द वे दे प्लेड. थोड़ा लंबा Yeah. पॉइंट है तो सबर करना. बट पहले अगर जो मैं चेल्सी फैन हूँ ना, तो मैं ये रिजल्ट को ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं करता, क्योंकि Yeah. ठीक है, इन द एंड दे वन. 3 पॉइंट्स आर 3 पॉइंट्स एंड गोल्स आर गोल्स. आई एम हैप्पी जैक्सन के लिए. ही हैड अ रफ स्टार्ट अगेन इन द प्रीमियर लीग. टू मच प्रेशर ऑन हिम. ही वाज नेवर सपोज्ड टू बी रेगुलर स्टार्टर. उसको करना दिया तो गुड फॉर देम. अगेन टू द पॉइंट कि यार इमेजिन तुम लोग 9 मैन के अगेंस्ट खेल रहे हो ऑलमोस्ट वन होल हाफ ऑफ फुटबॉल. वो टीम इतना कॉम्पैक्ट है सेंट्रल लाइन में, जैसे आलोक ने बोला, पूरा विंग्स खुला ही रखा है. मतलब तुम लोग गोल मार के बताओ. ठीक है, इन द एंड गोल मार दिए, ठीक है, बट कभी और कैसे यू कंसीडर गोल वो जो मार्जिनली ऑफसाइड था. दूसरा गोल ऑलमोस्ट इतना हुआ कि वो प्लेयर भाग भाग के थक गए, उसके पास पावर नहीं था. वरना दिस गेम कुड हैव बीन वेरी डिफरेंट. आलोक, दिस गेम कुड हैव बीन अ Yeah. 3-2 ड्रॉ, विन टू स्पर्स बाय द वे, बोथ दोस चांसेस. टू माय पॉइंट एंड दैट टू गिव यू माय लॉन्गर पॉइंट कि यार एंगे की मेंटालिटी अच्छी है. उसने आज बता दिया कि मैं ऐसे ही खेलने वाला हूँ, मेरा बिलीफ सिस्टम ये है. उसने प्लेयर्स को चैलेंज फेंका है कि मैं ऐसे ऐसे ही खेलूंगा, तुम लोग भी ऐसे ही खेलने वाले हो. आई वांट टू सी कि तुम लोग ऐसे कैसे खेल सकते हो. ठीक है, रेड कार्ड हुआ ना 10 मैन. ओके, 9 मैन तो ज़्यादा ही हो गया. 10 मैन ऐसे ही खेलना है. जैसे ही करना है तुम लोग अडेप्ट कर लो. द प्लेयर्स हु कैन अडेप्ट टू दिस विल स्टार्ट, द प्लेयर्स हु कैन नॉट अडेप्ट विल नॉट स्टार्ट. सिंपल. ये थोड़ा मुझे एक चीज़ है, because we're talking about title contender, कि last year Ten Hag played the same way, very bullishly, very my way or the highway. बहुत ही बार उसने अपना थोड़ा सा you can say naivety आया था in a big game where he was like tactically change नहीं किया, which hurt him. But by and large he played well last season, right? I feel Ange right now is also trying to show the same thing कि यार मेरा ये स्टाइल है, मेरी स्क्वाड का ये स्टाइल रहेगा. My squad will be these warriors, they'll be champions. I want this team to play this way where the fans are happy and I am happy. So for that, just having that mentality, and if it works out for you, that mentality automatically makes your top 4 side. ठीक है? Now only difference is to make a title winning side, तुम लोगों को squad depth चाहिए. वो नहीं है. Yeah. Which is why I have said कि यार, anyone have discussed कि will this be can you all challenge for the title? Yes, why not? Yes, you lost players today, but irrespective, you are still not dropped to 7th or 8th suddenly, right? एक ही गेम हारे हो अभी. Not all. Yeah. एक ही गेम हारे. और मैं यही कह रहा था कि जिस तरह से अभी टेबल फॉर्म हुआ है ना, सिटी आर जस्ट 1 point above us. Both Arsenal and Liverpool are still 2 points below us, right? Correct. So we haven't lost much. Okay, if we had to वो lose a याद game, it's the For Ange's if we had to mentality lose वाला a game, point it's a game. It's a right game week to lose the game, right? उसके बाद हमारा वुल्स एस्टन विला है. माय ओनली प्रॉब्लम हियर इज जस्ट लाइक कि ये रेड कार्ड्स और इंजरीज है, वो अगर लॉन्ग टर्म रहती है, मतलब ये उसके वजह से जो हमारे प्लेयर्स अभी मिस आउट होने वाले हैं, उसका इम्पैक्ट आगे वाले गेम्स पे भी होने वाला है अनफॉर्चुनेटली. बट डिस्पाइट दैट, अनिमेश जो अभी ये भी कह रहा है, मयंक ने जो कह रहा, हम वो पॉइंट पे भी बात किए थे. I've never seen a team with 2 men down play like that. You guys should be more proud of your team than Chelsea. We've played well in a sense, in the even if we miss out on, let's just say, the likes of Romero and Van de Ven for the next 4 weeks or 5 weeks, I feel we'll still be okay. In a sense, Eric Dyer looked decent today in an attack which has a great pace in it. Almost scored a goal, like showed that mentality to
और अनिमेश, आप, आई थिंक यू मस्ट हैव सीन दिस इन योर टीम इज ऑल्सो, कि when a player is sidelined for a long period, right, and when he gets the chance, now he's going to try extra to get that chance and basically cement his position in that team. I know Hmm. he's in the last year of his contract, he can go Hmm. free anywhere, but with Euros coming and whatever he has felt for Tottenham, he's been at Tottenham for 9 years now. So Is I in think he your will innate get desire to be extra. a footballer. It what Yeah, desire do you have left? अभी उसको कुछ yeah, क्वेश्चन किया है नहीं कि I don't think you're good enough yeah, for this squad. Ange says I want to play yeah, this way. चलिए उसको लगता है Eric Dyer yeah, can't play his way, right? Eric Dyer is not yeah, of that quality. You can't play his way. Now it is up yeah, to Eric Dyer to show कि I have passion to play football. Forget for Tottenham. मुझे एक yeah, फुटबॉलर टॉप लेवल पे बनना है, मुझे टॉप लेवल पे अभी yeah, भी कंटिन्यू करना है खेलने के लिए। उसके अलावा yeah, ये गेम छोड़ के और कोई अच्छा चांस नहीं आएगा आने वाला है तो रेस्क्यू हिज करियर। एंड टू माय अर्लियर yeah, पॉइंट कि दिस इज एंगेज चांस कि ही सेड माय टीम विल हैव दिस कैरेक्टर, माय टीम विल प्ले दिस वे। आई फील दैट टेस्ट yeah, स्टार्ट्स टुडे and will end before the City game. If you'll ride out yeah, and you'll get those ugly drawn out 2-1 1-0 wins, you're on track yeah, still. Points drop yeah, हो गए इन गेम में तो obviously you know the worst case scenario. It's not like it is tough, but yeah, to the yeah, point ki yaar still yeah. good, like Ackerman, yeah, या एक्करमैन कह रहे हैं बेंटांकुर मिस्ड एन ओपन गोल, होता है। सेकंड गेम बैक, अभी भी वो फुल नहीं है। समटाइम्स दो डिसीजन मेकिंग, ही स्टिल वाज थिंकिंग प्रॉब्ली मैं हेडर मारूं या पैर से मारूं, एंड देन दैट थिंग हैपेंड। You must have seen Son, like our two goals got disallowed because of a very marginal offside. hmm. Son's first goal though was very, very marginal offside, and I think we could have killed the game in the first 10-15 minutes itself. I think that disallowed goal kind of put us on a very bad note. But कोई बात नहीं, होते रहता है ये। Tottenham sat up for a suicide playing that high line. Nothing brave in it. Bravery is the kindest word for stupidity sometimes. I agree, अंकित। हम ये शायद कह सकते हैं Yeah, कि अगर टॉटनम ने इस गेम को बस सी आउट करने के लिए बिठाया होता अपनी टीम को पीछे, तो और शायद खाना हम ड्रॉ घिसते कर सकते थे, बट नहीं। हम नहीं ये 4 गोल जो एंड में खाए ना, वो पहले ही खा लेते, बिकॉज 100% यू हैव योर और खराब ही स्ट्रेंथ्स। घिसते yeah, या यू ऑलवेज प्ले टू योर स्ट्रेंथ्स। द थिंग इज, आप uh, आप अगर घोड़ा, मतलब आप अगर घोड़ा चलाते हो कभी, इफ यू सी द रेसेस एनी टाइम, you will see that if your horse has one thing that he can do well, even in all the adversaries, or in all the problems, you cannot lose that one thing. You will have to keep running the same way, because अगर आप slow हो जाते हो, you're never going to cross that line only. I think वो एरिक डार का अगर गोल चले जाता, अगर आप बेंटांकुर का वो गोल चले जाता, तो द स्टोरी वुड हैव बीन टोटली डिफरेंट हियर। correct वही है, गेम्स मार्जिन से हो जाता है। इवेंचुअली द स्कोर लाइन विल फ्लैटर चेल्सी, कि उन्होंने 4-1 से जीत लिया इस गेम को। correct बट अगर कोई भी hmm. गेम देखेगा तो उनको लगेगा, उनको समझेगा कि ये probably they did not deserve to win 4-1, बट डिजर्व वगैरह तो कुछ बात नहीं होती। 3 पॉइंट्स एट द Like I 3 said, पॉइंट्स three एट the points end are of the 3 points now. Alok, abhi they yeah, won, they got those goals. Jackson got a hat trick, which yeah, on paper, yeah, great to yeah, always have a striker, but we saw the goals. But anyway, goals are goals. Or to your point, I agree, yaar. If we both discussed this at halftime, कि literally halftime start, we both said कि यही खेलेगा, Highland खेलेगा. yeah, If he would have played a yeah, defensive block, इधर किसी ने comment में डाला है कि he should have played the low block as a Chelsea fan. By low block yeah, with 8 outfield players, how? मतलब वो घिसा घिसा के वो आउटसाइड से शॉट ले लेके गोल मार ही देते हैं, yeah, राइट? yeah. एंड मानस का look मैसेज at भी आया था मुझे, सेम। क्या बोल रहे हैं? आई एम जस्ट रिप्लाइंग टू मानस ओनली। वो भी वही बोल रहा था जो यहाँ पे आके बोला, क्या पैसा वसूल मैच एंड ऑल ऑफ दैट। 100%. I mean, like, it's are we calling this bravery, stupidity? No, you and I both agree it's partially stupid or mad love, right, to play this way. But clearly, he या realized that my team, he knows my team cannot do a low block. My team will not hold on to a draw. उनसे ये नहीं होने वाला है. Only way ऐसे या कुछ मिलने वाला है, ऐसे मिलने वाला है, तो मैं ऐसे खेलूंगा. We are not discussing the stupidity or the romance or we are being very pragmatic. The manager thought this was his only way to get something out of this game, so he did this. That's it, right? या करेक्ट, या। हिमांशु कह रहे, जैसे मैंने कहा था, हिमांशु इज बाय द वे वन ऑफ माय मोस्ट
loyal supporter, has been here from the first video itself. मेरे सारे videos पे फर्स्ट कमेंट होता है ऑलमोस्ट हिमांशु का. ट्विटर पे मुझे पूछते रहता है कि भाई अगला वीडियो कब आएगा, अगला वीडियो कब आएगा. हिमांशु वाज द पर्सन वो केप्ट आस्किंग मी कि भाई वॉचलॉन्ग कब होगा, वॉचलॉन्ग कब करोगे. और मैं स्क्रीनिंग्स पे रहता हूँ तो मैं वॉचलॉन्ग कर नहीं रहा था. अभी लूटन का मत गेम करो। मैंने वॉचलॉन्ग किया. और हिमांशु ने आज कहा है कि भाई आज के बाद तुम वॉचलॉन्ग मत करना बिकॉज दोनों गेम्स हमारे वैसे हो गए. हिमांशु, आई एम गोइंग टू टेक अ लॉन्ग ब्रेक फ्रॉम वॉचलॉन्ग्स नाउ. आई एम ओनली गोइंग टू डू नहीं नहीं, वीडियोस एंड द चलो लाइव्स. मैं करता हूँ वॉच अलोंग चैनल पे तेरे गेम के लिए, तू उधर उल्टा ज्वाइन करना. पुट द कर्स ऑन टू दिस साइड. टेंशन नहीं. हाउ Yes, we बैड can कैन do that यूनाइटेड, definitely. हाउ बैड कैन यूनाइटेड गेट, डोंट Yes. वरी, हम लोग कर लेंगे. we played so well without Van de Ven, Romero, and Udogi. Yeah, that's what I'm saying. That even after losing our best players, we still kept going at it, and we did not lose the way we play. तो वो है. हम लोग 5 मिनट में स्ट्रीम बंद कर देते हैं क्योंकि बहुत लेट हो गया. आई नो दैट अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू गो एंड स्लीप. ठीक है. बस लास्ट कुछ कमेंट्स देता हूँ मैं एक बार. इफ सॉन हैड इक्वलाइज एट 90th, चेल्सी वुड हैव बीन फिनिश देन एंड देयर. हाँ, वो सॉन को जो एक चांस मिला था, आई थिंक ही वाज टायर्ड. ही स्टिल वेंट एट इट एंड प्रोबेबली थोड़ा सा यहाँ वहाँ एंड ही कुड हैव स्कोर्ड दैट गोल. अगेन मार्जिन्स की बात है. वो एरिक डायर का गोल जाता अगर, तो तभी भी शायद गेम पूरा खत्म हो जाता था. तो दैट्स दोज आर द थिंग्स. I don't know if it was stupid or brave, but this sure as hell were exciting. Yes, Ayush, यही कह रहे हैं हम. Football has to be exciting. Football has to be that gives you pleasure. जो आपको रात को 3:45 भी देखते वक्त आपको सीट से उठा देता है 2 मिनट के लिए. अगर वो फुटबॉल नहीं देखना है तो फिर मैं रात को 3 बजे तक क्यों जगूंगा. आप 3 बजे 3:30 बजे भी मैच को देखने को रेडी थे बिकॉज यू न्यू कि विद दैट हाई लाइन एनीथिंग कुड हैपन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एंड दैट केप्ट यू एक्साइटेड. एंड दैट्स व्हाट आई एम लाइकिंग अबाउट एंड लविंग अबाउट दिस टीम. फैजल कह रहे हैं कि इंजरी का बताओ यार, मेडिसिन एंड वीटीवी. मैंने ऑलरेडी कह दिया है फैजल. वैन डे वीन का इंजरी जो है वो लॉन्ग टर्म रहेगा, इन द सेंस 5 से 6 वीक डेफिनेटली. Madison, I don't think it's anything serious. He will play against Wolves. Looks like that. Yeah. डायर ने जब गोल मारा था एंड जब वो ऑफसाइड हुआ था तब मुझे तो यार रोना आ गया था. भाई तुम मेरे स्ट्रीम ना थोड़ा रिवाइंड करके देख लो. जब डायर का गोल गया था मैं स्ट्रीम से सीट से उठ के नाच रहा था, पर अनफॉर्चुनेटली वो ऑफसाइड चला गया. बट होता है राइट. Chelsea cohesiveness is really bad. Tottenham, I believe Tottenham have this in them to catch Chelsea on the counter. Maybe Alok, this is the catalyst for Chelsea finally. Maybe they start playing competent, cohesive football. I mean, like I said, for them, win is a win. उनके लिए ये attacking play, but I mean they can't hit these FIFA goals बार बार. So maybe they have to try to play better to the middle for them. But yeah, Udogi and Romero कितने matches के लिए बाहर. Romero 3 games, Udogi 1 more game suspended. 1 game. 2 yellow cards. Yeah. So वो तो है. शुभम कह रहा है कि या विला के लिए आ जाएंगे उडोगी. शुभम भी भाई कह रहे हैं कि बिग लेसन फॉर उडोगी. आई एम श्योर ही विल लर्न फ्रॉम दिस. Yes, 20-year-old man. First game back from his injury, he looked definitely tired. He has that knack of getting pumped up. Maybe a little too pumped up. He'll learn. Yeah. Okay. होता है ये चीजें. No, nothing against it. और बस लास्ट still unbeaten with 11 men कह रहे हैं Spurs. Good one. Good one. Ashish Srivastav, I think I'll take the last comment. Love this team. Losing is just a part of the game. I'm happy while going to sleep. Thank you for stream anyway. Bye. Thank you so much Ashish for joining this stream. 15 लोग अभी भी स्ट्रीम पे हैं, तो गाइज प्लीज स्ट्रीम को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, फुटबॉल ब्लडी हेल को सब्सक्राइब करो. उनका हैंडल मैंने टाइटल में डाल दिया है. क्लोजिंग कमेंट बस लाइक just few sentences from Animesh first and then I will go I will go after that. Animesh, just in like a very short thing, what do you see for this Tottenham going forward? What do you take from this game? Like what should the team take from this game? I feel mainly like हम लोगों ने already डिस्कस किया है राइट कि और एक सेकंड वापस थोड़ा लैग हो रहा है. Just give me 2 seconds. I'm shutting the unnecessary windows. हाँ, so basically मुझे यही लग रहा है कि यार just a second. तब तक आदित्य, you owe me at least 200 rupees in the super chat. मैंने कहा था अगर चेल्सी जीतेगी तो 200 rupees का सुपर चैट तेरे से आना चाहिए, तो प्लीज डू दैट एंड देन गो टू स्लीप.
He's my friend, but you can just send me on Google Pay directly हाँ, also, Aditya. जीपे कर दो, जीपे, पेटीएम, भीम पे सब एक्सेप्ट करते हैं, कोई टेंशन नहीं है। Yeah. हाँ, आई जस्ट फील यार कि look, we've discussed कि तुम लोग का फिक्सचर रन क्या है, we know what the problem is. Actually बहुत simplistic है. You have only X number of players on the bench. वो players अभी आने वाले, खेलने वाले. Bentancur back is great. Unfortunately उसको शायद rush करना पड़ेगा. But you get Bentancur into this, you kind of slot him in behind. थोड़ा midfield को hybrid बना दो. There's no reason why you all can't see this through and still be in the top 4. Maybe you might drop points against Aston Villa. वो अलग ही कुछ फुटबॉल खेल रहे हैं. But I feel by and large, before City, you will have everyone besides Van der Ven back, and Dyer should be enough by then. I feel it's good time still for Spurs, nothing to worry about. Yeah, sad result, but negatives come है, just typical, right? Romero is थोड़ा hot-headed, वो मालूम था. Yeah. And Vicario has proved his mettle again. He's been a good keeper so far. So good positives for you वहाँ पे, और कुछ नहीं. Yeah, I agree. Closing remarks from me as well. Uh, this game could have gone anywhere. At the start of the game, of course, we scored a goal. We thought that we are in it. That Son's goal. Uske baad, moment of madness from a few players here and there. We started misplacing our passes, and we lost the game. I feel we should take plenty positives from this game. We kept going at them. We created enough chances. Even with 9 men, we could have gotten something out of this game. No, क्या कहते हैं ना, no sadness, no complaints from this game whatsoever. If we had to lose a game this season in this current way, I think it's good that it has come in this game week when both Arsenal and Liverpool have lost points as well. So I really don't have any problem with this game currently. Just onwards and upwards, man. And yeah, come on, you Spurs. Correct. Good one for you guys. Yeah. Chalo, guys, what I will do is I'll end the stream. Anyways, you can stay here like for like 2 minutes or something. But yeah, हाँ, guys, bye-bye. Good night. All of you who joined this stream, please like this stream. Subscribe karo is channel ko. Please, Football Bloody Hell ko bhi channel subscribe karo. And yes, we'll see you soon. Thank you so much, guys.